Now on air with the CritCon commentary team. नमस्कार सभी दर्शकों का, हमारे श्रोताओं का स्वागत है यहां पर, जहां बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट मैचेस का लाइव पॉडकास्ट हम करते हैं क्रिककॉन लाइव ऐप पर। और हमारे प्यारे दोस्त सभी जो हमें सुनने के लिए बेकरार होते हैं, उनके लिए हम अभी लेकर आए हैं, हम यानी मैं स्वप्नील जाधव और मेरे साथ है शौर्य लोंढे, जहां बहुत ही बेहतरीन मैचेस देखने मिले हैं। श्रीराम कैपिटल महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 में यह है मैच नंबर 6 और ये हो रहा है चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु इंडिया में। और भारत में ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन स्टेडियम, जहां पर शिवमोगा लायंस और कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स के बीच होगा घमासान। और मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि इस टूर्नामेंट में, इस छठे मैच में टॉस जीता है कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने और प्रथम क्षेत्ररक्षण, प्रथम गेंदबाजी करने का यहां पर निर्णय लिया है। तो पहली बल्लेबाजी करेंगे शिवमोगा लायंस। निहाल उल्लाल जो विकेट कीपर है, रोहन कदम, रोहित कुमार के, अभिनव मनोहर, श्रेयस गोपाल जो कप्तान है, शिवराज HS शरत, प्रणव भाटिया, वासुकी कौशिक, क्रांति कुमार और अदकोश हेगड़े। और जहां तक सवाल है कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स का, मयंक अग्रवाल जो कैप्टन है, भुवन राजू, जयवंत आचार्य, पवन देशपांडे, सूरज आहूजा विकेट कीपर, लोचन अप्पन्ना, शुभंग हेगड़े, ऋषि बोपन्ना, टी प्रदीप कुमार LR और विद्याधर पाटिल। इनके पहले ही गेंद पर यहां पे एक चौका, नो बॉल थी और 4 रनों का इजाफा यहां पर कर दिया है बिना किसी गेंद के। यहां पर 5 रन चढ़ जाएंगे स्कोरबोर्ड के ऊपर। रोहन कदम बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहां पर करते हुए अपने संघ के लिए, ये बिल्कुल एक लूजनर फेंकी थी, वो लूजनर मतलब बहुत ही फिसल गई थी हाथ से और पिच के बाहर जाकर पिच हुई। और यहां पर 5 रनों का इजाफा स्कोर के लिए। रोहन कदम का कुछ भी उसमें संयोग नहीं था, क्योंकि बॉल इतनी दूर थी कि कहां पर गिरी वो था पिच के बाहर वाला इलाका। विद्याधर पाटिल, इनको अभी रोकना होगा इस गति को जिससे रन बन सकते हैं, क्योंकि 5 रन अगर बन चुके हैं, पहली ही गेंद आपने फेंकी लेकिन वो गिनी नहीं गई क्योंकि नो बॉल थी। और यहां पर बहुत ही अच्छी शुरुआत लायंस के लिए। ये एक हमेशा देखा गया है कि जब भी आप, माफ कीजिए, ये नो बॉल नहीं दिया गया है, ये वाइड बॉल दिया गया है, अंपायर ने डिसीजन चेंज किया है, तो ये वाइड और 4 रन, मतलब 5 रन तो ऐसे मिल गए, तो ये फ्री हिट नहीं होगा। तो ये 5 रन मिल चुके हैं संघ को। बहुत ही सूझबूझ भरी खेल की एक आकृति यहां पर साकारनी होगी दोनों भी टीम्स को, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि जब आप बहक जाते हैं, रन्स आपको फ्री या फिर ऐसे वाइड्स और नो बॉल्स में मिलते हैं, तो आप शायद अपनी बैटिंग या अपनी बल्लेबाजी पर ज्यादा जोर नहीं लगाते। लेकिन यहां पर ऐसे नहीं होना चाहिए। यहां पर दोनों भी टीम्स ने एक अच्छी शुरुआत उन्होंने करनी होगी। यहां पर जब भी 14 अगस्त को, मतलब कल जब शिवमोगा खेले थे ड्रैगन्स के खिलाफ,
मैंगलोर ड्रैगन्स के खिलाफ। वहां पर शिवम मोगा ने अपने स्कोर को 9 रन से डिफेंड किया था, तो 9 रन से हार गई थी वहां पर मैंगलोर ड्रैगन्स। और जहां तक बेंगलुरु ब्लास्टर्स का सवाल है तो वो हारी थी गुलबर्गा मिस्टिक्स से, और गुलबर्गा मिस्टिक्स से हारी थी वो मैच, जहां पर उन्होंने स्कोर तो रखा था लेकिन डिफेंड नहीं कर पाई। और ये अक्सर देखा गया है कि गलत, जब आप गलत खेलते हो मतलब अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं खेलते हो, आत्मविश्वास के साथ नहीं खेलते हो, तो आपसे जीत बहुत बहुत दूर चली जाती है। यहाँ पर निहाल और रोहन, इनकी अच्छी पारी देखने की एक उम्मीद हम लगाए बैठे हैं, और बहुत ही अच्छा लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेल दिया है यहाँ पर निहाल ने। और एक अच्छी सी शुरुआत यहाँ पर अपने टीम के लिए करते हुए दोनों भी बैटर्स, निहाल ने ये चौका लगाकर सिद्ध कर दिया कि वो अब नहीं रुकने वाले। 20 ही तो ओवर है, 120 ही गेंदें हैं, तो वो शायद ही अपने आप को रोक पाएंगे। ये तीसरी गेंद थी, नहीं हाँ यह तीसरी गेंद थी, और 10 रन अब बन चुके हैं, क्योंकि पहले गेंद के पहले ही 5 रन मिल चुके थे वाइड के स्वरूप में। फिर 1 रन लिया गया दूसरे गेंद पर रोहन कदम द्वारा, और फिर निहाल ने उनके पहले ही गेंद पर चौका लगाकर इसका आगाज कर दिया है कि वो यहाँ पर रुकने नहीं वाले। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। ऋषिराज झा जो थर्ड अंपायर हैं, बखूबी जानते हैं उनकी क्या होगी अहमियत इस मुकाबले में। यहाँ पर एक और वाइड, तो लाइन और लेंथ से भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं विद्याधर पाटिल। तुरंत वापस आना होगा, नहीं तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं। जी हाँ, दिक्कतें होने की जरूर यहाँ पे अपेक्षता नहीं होगी। और बॉलर 2 वाइड पहले ही डाल चुके हैं इस टूर्नामेंट, इस पहली ओवर में। और अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो छठी मैच है ये। इसके पहले 5वीं मैच जो हुई थी इसी ग्राउंड में मैसूर और मैंगलोर के बीच में। और उसी मैच की बात करने से पहले मैं कहूँगा कि यहाँ पे निहाल एक बढ़िया पारी खेलने के रूप में दिख रहे हैं। इस बार वापस वही डीप थर्ड की तरफ मार दिया है उन्होंने, एक और चौका इस बार कट कर दिया गया है, और काफी बढ़िया तरीके से वो शॉट प्लेस किया। फील्डर्स को बड़ी ही प्रिसीजन के साथ काटा है 2 फील्डर्स को, और उनके बीच में से एक और चौका। ये विद्याधर की ओवर काफी महंगी पड़ती हुई। और जैसे मैं बात करना चाहूंगा इस टूर्नामेंट के बारे में, छठी गेम है ये। और उसके पहले जो मैसूर वर्सेस मैंगलोर का जो गेम था, वहां पे मैंगलोर ने तो 200 का टारगेट दिया था, पर मैसूर ड्रैगन्स वो 200 का टारगेट चेस कर पाई। और उसमें सबसे बड़ा हाथ बेल्लूर रवि सरत का था, 111 रन। तो नेल्सन बनाया अपनी टीम के लिए और मैच जिताई है उनने। ये काफी बढ़िया पारी, और ये टूर्नामेंट एक अच्छे स्टार्ट की तरफ बढ़ता हुआ ये छठी गेम होगी। और ये गेंद आखिरी होगी इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप। निहाल ड्राइव करना चाहते थे पर मिस टाइम कर दिया। 15 रन आ गए हैं, एक अच्छी ओवर बैटर्स के लिए मैं कहूँगा। 15 रन और 9 विकेट के नुकसान पे आफ्टर ओवर। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक यहाँ पर एक नई शुरुआत की अपेक्षा से
प्रदीप आए हैं गेंदबाजी करने को, लेकिन शुरुआत में प्रदीप टी ने एक बहुत ही बाहर जाती हुई गेंद आउटसाइड दी लेग स्टंप डाल दी और यहां पर रन बहाल कर दिया है। तो एक ओवर ही हुई है अभी, इस पहली गेंद को गिना नहीं जाएगा क्योंकि वाइड थी। ये लाइन आपको नहीं करनी है, लेंथ आपकी सही हो सकती है लेकिन अगर लाइन आपने मिस कर दी तो बहुत दिक्कत हो सकती है। 16 रन पर खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज, अभी सेट हैं। यहाँ पर रोहन कदम भी, बिल्कुल रोहन कदम अभी पीछे नहीं रहने वाले, कदम कदम बढ़ाए जा, उनका ये मंत्र अब होने वाला है क्योंकि उन्होंने भी जड़ दिया है अपनी पारी का पहला चौका और 20 रन हो चुके हैं यहां पर लायंस के लिए। शिवमोग्गा लायंस जिनको आमंत्रित किया है बल्लेबाजी करने के लिए प्रथमतः बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने, और वो चाहेंगे कि पहले कुछ अंतराल में विकेट्स गिरे। अगर ऐसी गेंदबाजी करते रहे तो विकेट्स नहीं गिरने वाली, क्योंकि आप लाइन और लेंथ ऐसी डाल रहे हैं जहां पर फ्लिक और पुल करना बहुत ही आसान है। और ये दोनों भी बल्लेबाज जो हैं अपने अपने प्राइम पर खेल रहे हैं, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है यहां पर, क्योंकि ये गेंदबाजी में इतनी पेस नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो आपके पास अगर ज्यादा पेस नहीं है तो आपने बिल्कुल एक्यूरेट गेंदबाजी करनी है, वो हार्ड लेंथ आपको एक्सप्लॉइट करनी है, एक्सप्लोर करनी है। और क्योंकि आपने पहला जो आपका मैच था वो गवाया है, कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स, इन्होंने पहला मैच गवाया था और उस समय मतलब आपने 137 रन बनाए थे और आप डिफेंड नहीं कर पाए, तो इसीलिए आज आपने चेस करने का फैसला किया है और उस फैसले को आपको अमूमन सिद्ध करना है यहाँ पर। और सीधा सीधा कीपर आकर बॉलर को शाबाशी देते हुए कि बहुत ही अच्छी गेंद आपने करी थी, ये अंदर आती थोड़ी सी स्विंग हुई और बिल्कुल बॉलर के हाथ में वापस गई। कैच की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि एक बाउंस होके गई थी पिच पर। और यहां पर रोहन कदम ने भापा होगा अभी कि कुछ अलग हो रहा है, गेंद की तरफ थोड़ी सी स्विंग हो रही है। बैंगलोर में हम देखते हैं हमेशा एक स्विंग प्राप्त होती है, लेकिन उसको भी टैकल करने की क्षमता रखते हैं ये दोनों बल्लेबाज। 1 रन ले लिया है पॉइंट की दिशा में खेलकर, स्कोर हो चुका है 21 रन। 1.4 ओवर का खेल यहां पर प्रदीप टी अपनी पहली ओवर में एक चौका बहाल कर चुके हैं रोहन कदम को, और फिर 2 डॉट बॉल्स के बाद एक सिंगल यहां पर आया। तो कुल मिलाकर वो पहला एक वाइड, फिर एक बाउंड्री और फिर 2 डॉट के बाद एक सिंगल रन, 6 रन आ चुके हैं अब तक पहली 5 गेंदों में, और 4 गेंदों में, क्षमा करें। और देखना चाहेंगे कि अगले गेंद के लिए क्या अलग करेंगे प्रदीप टी। हाँ, प्रदीप टी एक, मैं तो कहूँगा उनके जो पहले गेंदबाज थे विद्याधर पाटिल, उनसे एक बेहतर ओवर तो डाल जरूर है। उन्होंने एक और चौका खाया है, पर अभी वो स्केल बैक इन मोमेंटम की जो जरूरत है बेंगलुरु ब्लास्टर्स को, वो अभी काफी ज्यादा लगेगी। बेंगलुरु ब्लास्टर्स वो टॉस जीत के गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, पर अभी रोहन कदम और निहार उलाल ही जो है वो कंट्रोल में लग रहे हैं और वो इस पहली 2 ओवर्स को उन्होंने ही कंट्रोल किया है। यहाँ पे एक पार्टनरशिप ब्रेक थ्रू जरूर लगेगा बेंगलुरु की टीम को, एक अच्छे एक अच्छे चेजेबल टोटल की तरफ। और यहाँ पे एक अच्छी डिलीवरी जरूर डाली है प्रदीप ने, बस होगी 1 डॉट, और डॉट के साथ होती हुई यहाँ पे ओवर समाप्त। 22 रन बिना किसी नुकसान के है लायंस की टीम। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप। 2 और 22 रन, और यहां पर फिर एक बार पहली ओवर में जिन्होंने 15 रन खर्च किए थे उन्होंने ये ओवर अब अपने आप को वापस लाने के लिए एक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि विद्याधर पाटिल
एक एक अच्छे गेंदबाज तो दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके पास दमखम है, एक अच्छी रनअप, एक अच्छा रिलीज है, लेकिन जब आप यहां वहां गेंद डालते हैं ना तो आपके संघ के लिए वो दिक्कत जरूर पैदा होती है। अब आपने 10 रन प्रति ओवर का एक अब तक का आपका सफर रहा है इन पहली 13 गेंदों में, बिल्कुल हालांकि उससे ज्यादा ही गेंदे किए हैं क्योंकि वाइड्स भी डाले हैं, तो दो तीन गेंदे तो एक्स्ट्रा की है आपने, और उसमें अगर आपने 10 रन प्रति ओवर का एक औसतम स्कोर रखा है तो उसके वजह से एक मोमेंटम जो है ना वो बैट्समैन के पास है। आज के इस माहौल में जहां पर हम देखते हैं कि 200, 220, 230 ये स्कोर अमूमन बन जाता है T20 में, और यहां पर हमने देखा है कि अभी उसने पिछले ही मैच में अपने 201 का स्कोर देखा, तो ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई दो राय नहीं है उसमें कि वो रन बन सकते हैं और चेज भी हो सकते हैं, तो उसका पीछा करना भी मुश्किलात नहीं अभी पैदा करता किसी के मन में, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बन सकते हैं तो हम चेज भी कर सकते हैं। बॉलर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल हमेशा होती है क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 ओवर्स होते हैं और आपको कमबैक करना होता है। उसमें आप अगर पहले ही ओवर में 15 रन खर्च करते हैं और इसके साथ ये वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप डिलीवरी थी, मतलब मैं डालता हूं आप मारिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, इस प्रकार की डिलीवरी थी, और थोड़ा सा उस साइड स्क्रीन की वजह से रुकावट तो आई थी, लेकिन उस रुकावट के बाद भी कंसंट्रेशन बिल्कुल 100% यहां पर रखते हुए निहाल उल्लाल, और ये चौका लगा दिया है कवर्स की दिशा में, कोई वहां पर प्रोटेक्शन नहीं था पॉइंट और कवर्स के बीच में। बहुत ही बेहतरीन ये प्रदर्शन, यहां पर 4 चौके लग चुके हैं 26 रनों में 2.2 ओवर में, और लायंस अच्छी तरह से गुर्रा रहे हैं। यहां पर खेल दिया है काउकॉन रीजन में एक और चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज, बहुत ही बढ़िया ये शुरुआत अपने टीम के लिए। 2.3 ओवर में 30 रन बन चुके हैं। विद्याधर पाटिल खासे महंगे साबित हो रहे हैं, 23 रन खर्च कर चुके हैं अब तक अपनी पहली 9 गेंदों में। जी हाँ, और अभी यहाँ पे कप्तान पे एक प्रश्न चिन्ह आते हुए कि यहाँ से वो किस बॉलर को स्पेल देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो विद्याधर पाटिल का स्पेल है शायद आज उनका दिन नहीं है। वो पहले भी ओवर में काफी चौके खा चुके हैं 2, और अभी भी 2 चौके खा चुके हैं और उनकी 3 ही गेंदे हुई है। तो यहाँ पे निहाल उलाल ने उन्हें परख लिया है, उन्हें जांच लिया है और वो उन्हें टारगेट कर पा रहे हैं। खैर यहाँ पे एक बेहतर डिलीवरी मैं बोलूंगा, आउटसाइड द ऑफ स्टंप डाला, थोड़ा और पेस का इस्तेमाल किया, और निहाल बस कट करने की कोशिश कर रहे थे, फील्डर को थी दी गेंद। और यहाँ पे ऑडियंस में काफी मेंबर्स, व्यूअर्स काफी आते हुए। जी हाँ, आज इंडिपेंडेंस डे है और लोग यहाँ पे इस स्वतंत्रता दिवस के दिन क्रिकेट का महोत्सव मनाने आए हैं यहाँ पे बेंगलोर में, और यहाँ पे निहाल उनके लिए वो एंटरटेनमेंट पैकेज लाते हुए मिड विकेट की तरफ, डीप मिड विकेट की तरफ यहाँ पे मार दिया है एक छक्का। इस मैच का पहला छक्का यहाँ पे निहाल के बल्ले से, और विद्याधर पाटिल को जैसे मैंने कहा पूरी तरह से खारिज कर चुके हैं। यहाँ पे एक बेहतरीन शॉट निहाल का, 23 रन उनके बल्ले से, एक चौका और 4 चौके उन्होंने एक छक्का और 4 चौके उन्होंने मारे हैं, केवल 10 गेंदें खेली है उन्होंने। तो यहाँ पे एक बढ़िया टोटल की तरफ रुख ले रहा है शिवमोगा लायंस का, और अभी देखना पड़ेगा कैसे रोहन कदम उनके साथ हाथ में हाथ ढल के पार्टनरशिप करते हैं। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि चलो एक बंदे ने 10 गेंदों में 23 रन बना चुके हैं, आपके एक बैटर ये बहुत अच्छे लय में दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो ये, दूसरी बात, अगर आपके सामने जो खड़ा है उसके मन में ये आ रहा है कि मैंने भी अभी कोशिश करनी चाहिए कि मैं भी चौके छक्के लगाऊं, तो ना करें। जब आपको गेंद आपके रेंज में मिले, आपके दायरे में मिले, तभी आप जाइए उस गेंद के पीछे, उसका पीछा कीजिए, छक्का चौका मारिए। लेकिन अगर आप जबरदस्ती जबरन आप अगर गेंद के पीछे जाएंगे तो आप विकेट गंवा सकते हैं। ये बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मार दिया है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा। वहां पर एक चौका हो सकता था लेकिन बहुत ही ऊंची गई थी गेंद, नहीं था डिस्टेंस, सिर्फ ऊंचाई थी। और मयंक अग्रवाल जो कैप्टन है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये कप्तानी
जो करते हैं ना बहुत अच्छी करते हैं। 3 ओवर के पश्चात 38 रन बिना किसी नुकसान के। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पर कुमार द्वारा। एक परीक्षा होगी अब बोलर्स की। कल्याण कुमार जो आए हैं अपनी पहली ओवर करने के लिए और यहाँ पर इस पारी की चौथी ओवर। लायंस 39 पर हैं बिना किसी नुकसान के, 25 रन पर खेल रहे हैं। निहाल उल्लाल जो अभी क्रीज पर है, स्ट्राइक पर है, और रोहन कदम उनके पास समय है। 8 गेंदों में 7 रन। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने थोड़े से कम रन बनाए हैं, क्योंकि एक ओवर से आपका मित्र, आपके जो सहयोगी हैं वो अच्छी पारी खेल रहे हैं, तो आपका विकेट बचाना प्रथमतः बहुत बहुत जरूरी है। और यहां पर देखिए फिर एक बार काउ कॉर्नर रीजन में खेलने की कोशिश थी, हवा में थी गेंद, लेकिन टाइमिंग इतना प्रॉपर नहीं था, इसीलिए गेंद बाउंड्री लाइन से काफी दूर ही समाप्त हो गई। उसकी रेंज, फील्डर पीछे जा रहे थे विद्याधर पाटिल और उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 2 रन बचाए अपने संघ के लिए। 2 रन का इजाफा इस स्कोर में होता हुआ 41 बिना किसी नुकसान के। ये चौथी ओवर चल रही है और एलआर कुमार यहाँ पर कर रहे हैं ये चौथी ओवर। दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं। पटकी हुई गेंद, फिर एक बार पुल करने की कोशिश इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, वहां पर डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद हैं, तो 1 रन ले लिया है आसानी से। और रोहन कदम अब करेंगे सामना एलआर कुमार का, ये चौथी ओवर 42 बिना किसी नुकसान के। जी हाँ, और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि निहाल वो खासा टाइम नहीं कर पा रहा है। हालांकि उन्होंने पहली ओवर काफी बढ़िया खेली, उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का जरूर मारा है, पर अभी मुझे लग रहा है वो थोड़े एग्रेसिव ज्यादा होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको वो बॉल नहीं आ रही है तो उन्हें वो शॉट्स की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे 2 बार, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, शायद इस वजह से वो जो बॉल्स थी जो हवे में गई थी वो नो मैंस लैंड में गिरी, पर अभी उन्हें भी मोमेंटम उन्होंने बना दिया है यहाँ पे अपनी टीम के लिए। तो अगर 1 या फिर 2 डिलीवरी वो सिंगल डबल लेके निकाल भी देते हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन दी एंड वही निकल के आ रहा है। अगर आप ऊपर मार रहे हो, बस आप थोड़ा रिस्क और ले रहे हो। इस बार एक बेहतर डिलीवरी एलआर कुमार की, रोहन कदम को यहाँ पे चकमा देते हुए केवल डॉट होगा। रोहन कदम अभी मारने का प्रहार करते हुए, और वो पीस ऑफ केक जो है वहां पे रनों का केक बट रहा है और रोहन कदम भी उसका एक पीस खाना चाहते हैं। और इस बार उन्होंने खेल दिया है लॉन्ग काउ कॉर्नर्स की तरफ और ये एक चौका होगा। उन्होंने इनर सर्कल को काफी इजीली क्लियर किया और 1 बाउंस और चौका जाते हुए यहाँ पे अंपायर एक बार देख भी रहे हैं कि ये चौका या छक्का, ये चौका ही दिया जाएगा, क्योंकि काफी बाउंड्री के पहले बाउंस किया गया है और करंट रन रेट यहाँ पे 12 का होते हुए तो 200 की यहाँ पे गुंजाइश जरूर होगी शिवमोगा लायंस की। इस बार एक चीकी सिंगल लेके किया है ओवर को समाप्त। दोनों बल्लेबाजों ने 47 रन आ चुके हैं ऑन बोर्ड बिना किसी नुकसान के 4 ओवर के बाद। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम
देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव हैं तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो Slashing at hit hard. This is a mantra that you need to follow every time you go after the ball, and that was a good looking cut shot towards the point region, and it was very close to the fielder, but yes, he was not able to cut it short before the ball reached, or rather I should say raced towards the boundary line. He is dealing only in 4s and 6s because every now and then you expect the bowler to come back into the rhythm. He is just making the bowler and the deliveries look very, very normal. And in this case, it is Nihal who started the crux of the runs, and he's batting on 28. 17 runs are to Rohan Kadam, and you need to give them some time. They have to buy themselves time, and in all the team meetings, you tell that they should be given enough time to set themselves for a long run, and when they actually go into the arena to face the bowlers, every now and then there are some news that have been circulated from the dugout saying that, hey, you just have to play a little more fast, a little aggressive, and there it is. You don't understand what to do. But for the time being, they are going good. They are going at a brisk pace. They are getting those runs freely, and all that is easier said than done, because only the two players who are batting understand what it is like inside, and no one else. Even the squad, which is full of 11 players, won't understand till they enter the arena to face at least one ball from the bowling side. And here it's neither a bad bowling performance, but they have been taken for some good runs. 4.3 overs, 53 for no loss are the Lions, the Shivamogga Lions, and after winning the toss, the Bengaluru Blasters elected to bowl first, and the reason they would have done that, looking at the pitch also, it looks good, so it will be a good track when they come to chase also. For the time being, the decision that they have taken is being questioned by some huge and some brutal hitting. Now that is just a pickup shot that has been played by Nihal Ullal, taking him to 40 runs, and he is just making fun of the bowlers. I think it is not 40, it is 34 runs to him, and what a shot that is. What a shot that is. 59 on the board for the loss of only 0 wickets. Just making that sound a little funny, but no loss actually. Pradeep T is now going for runs here. As many as 12 runs have been conceded in this over, and a couple of balls remain in the 5th over. Yes, at this point it is Nihal Ullal who goes again and gets what he wants. A very good catch there in the dugout, I will say, and again a sixer here. Pradeep wouldn't be happy. He wouldn't be happy. D. Pradeep. He had a very good first over by him, but at this point, I think what started off in the other game, which had been played here, is continuing, which is heavy hitting. And Nihal Ullal is at 40 of just 16. Quite a game. I mean, we are in the 5th over. We are ending the 5th over with this ball, and it will end the innings of Nihal as well, as he wanted to pull the shot. A very good shorter delivery by T. Pradeep and pull towards the fielder by Nihal. I think he wanted to continue his momentum of runs, but he had to take a bit of guess where the fielders are as well, and he just gave the ball towards the fielder, mistimed it, and that would be the last laughs for the bowler T. Pradeep. It is the wicket in the end,
65 for 1 is the score, and a very good catch by Jaswant there. Nihal Ullal, 40 of 17. It is 65 for 1 after the 5th over. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे। आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक। नए बल्लेबाज आए हैं यहाँ पर रोहित कुमार और वो साथ देंगे रोहन कदम का, क्योंकि कई ओवर में आपने विकेट गंवाया है एक बहुत ही सेट बल्लेबाज का जिनका नाम था निहाल उल्लाल। 40 रनों की एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही धमाकेदार पारी खेलकर वो आउट होकर पवेलियन गए हैं। यहाँ पर रोहन कदम को अब ये मोमेंटम कैरी करना होगा आगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्यादा ओवर नहीं हुए। अच्छा पावर प्ले यहाँ पर बीतता हुआ उनके लिए 65 रनों पर 1 विकेट है और ये बिल्कुल नजदीक थी बल्ले के, इसलिए अंपायर ने उसको वाइड करार नहीं दिया, लेकिन गेंदबाज को बोला भैया 1 फॉर द ओवर। इस ओवर के लिए आपकी शॉर्ट बॉल डालने की क्षमता खत्म हो चुकी है, तो आप अब शॉर्ट बॉल करेंगे तो आपको नो बॉल दी जाएगी। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर शुरुआत की है बल्लेबाजों ने लायंस टीम के लिए। 65 पर 1, 5.2 ओवर हो चुके हैं और यहाँ पर खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में, लेकिन बॉल जाती हुई स्पीड ऑन के क्षेत्र में और ये 1 रन का इजाफा यहाँ पर रोहन कदम और लायंस के लिए। शिवमोग्गा लायंस इनको आमंत्रित किया गया है बल्लेबाजी करने के लिए और यही कारण है कि उन्हें बेंगलुरु ब्लास्टर्स के सामने एक अच्छी चुनौती रखनी होगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ज्यादा रन नहीं बना पाए, ज्यादा रन की व्याख्या T20 में अक्सर 200-220 की हो सकती है और यहाँ पर उनके पास अब तो ये क्षमता भी है, क्योंकि 66 रन बन चुके हैं 5.3 ओवर में। ये पावर प्ले के आखिरी 3 गेंदें देखते हैं रोहित कुमार क्या करते हैं। ये डक करते हैं और एक बाउंसी डिलीवरी को सीधा कीपर के हाथ में जाने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया विकेट मिली थी जो निहाल उल्लाल की थी। काफी आगे खड़े थे पिच के और उसके कारण उनको समय कम मिला, और जब आपको समय कम मिलता है तब आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते अपने संघ के लिए। फिर भी 40 रनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही डैशिंग पारी खेलकर वो यहाँ पर आउट हो चुके हैं। देखते हैं आगे रोहित और रोहन क्या करते हैं। पहली गेंद पर रोहित को बीट कर दिया था ऑल एंड्स अप और यहाँ पर अब 5वीं गेंद भी डिफेंस करके कवर्स की दिशा में ढकेल दी है। 1 गेंद शेष है पावर प्ले की। 66 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। रोहन कदम खेल रहे हैं 18 पर और रोहित कुमार खेल रहे हैं 0 पर। 2 गेंदें यहाँ पर वो व्यतीत कर चुके हैं। थोड़ा सा समय 5 मिनट पहले आए थे और यहाँ पर उनको भी अब सोचना होगा कि क्या आप कर सकते हैं और क्या आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छी शुरुआत आपने की है। तो 3 लगातार डॉट गेंदों के साथ 1 ही रन इस ओवर से आता हुआ बहुत ही बढ़िया ओवर रहा ये। 6 ओवर के बाद 66 1 विकेट के नुकसान पर। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे।
आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको शुभंग हेगड़े आए हैं इस पारी की 7वीं ओवर फेंकने के लिए और बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। देखते हैं क्या करिश्मा कर पाते हैं, क्योंकि मयंक अग्रवाल एक बहुत अच्छे कप्तान तो हैं, लेकिन सिर्फ कप्तानी से आपकी मैच नहीं संभल सकती। एक अच्छे कप्तान होंगे आप, लेकिन इस मैच में आपको अगर वापसी करनी है तो आपको विकेट चाहिए। आपको अगर विकेट चाहिए तो एकदम सटीक गेंदबाजी करनी हुई। अगर आप वो भी नहीं कर पाते तो थोड़ी सी मुश्किलात आपके लिए होनी चाहिए। निर्माण यहाँ पर पहला रन रोहित कुमार का अपनी व्यक्तिगत चौथी गेंद पर, और 6.2 ओवर में 68 रन बन चुके हैं। रोहन कदम जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, उनका साथ छूटा अपने पार्टनर से निहाल उल्लाल से, और उन्हें वापस डगआउट की ओर जाना पड़ा निहाल को। यहां पर रोहन कदम और रोहित कुमार को अपने आप से एक दूसरे से बात करना होगा कि 50-50 रन या 10-10, 20-20 रन हम बनाते हैं एक 1.5 ओवर में। तो आप अगर आप अच्छी पारी खेलना चाहते हैं तो आपको संयम तो रखना होगा, लेकिन साझेदारी आपकी पनपनी चाहिए। वो एक आध बाउंड्री एक ओवर में लगना और 3-4 सिंगल्स या डबल्स आना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो मुश्किल मतलब आप रनों की गति अगर नहीं बढ़ाएंगे तो एक बड़ा स्कोर, विशालकाय स्कोर नहीं खड़ा कर पाएंगे। जी हाँ, और यहाँ पे 4 गेंदे होते हुए, माफ कीजिएगा 5 गेंदे होते हैं, और यहाँ पे जो मोमेंटम शुरुआत जो की थी निहाल ने, उसका ब्रेक थ्रू उसके विकेट के बाद आ गया है। यहाँ पे रोहन कदम जो इतने अच्छे बल्लेबाजी और अच्छे लय में दिख रहे थे, 3 चौके उनके बल्ले से आए हैं, वो लय को अभी तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे, अभी वो थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो उनके साथ आए हैं रोहित कुमार, उन्हें भी उनके साथ पलना पड़ेगा और यहाँ पे एक अच्छी साझेदारी और एक अच्छी पारी का गठन करना पड़ेगा। खैर, एक बढ़िया डिलीवरी शुभांग से, और वो एक डॉट बॉल से करेंगे अपनी पहली ओवर की समाप्ति। 71 फॉर 1 है 7वें ओवर के बाद। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे। आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट? जी हाँ, यहाँ पे 8वीं ओवर की शुरुआत होते हुए नए गेंदबाज आते हुए ऋषि बोपन्ना के पास वो टास्क होगा कि जो मोमेंटम ब्रेक किया है यहाँ पे मयंक अग्रवाल के गेंदबाजों ने निहाल के विकेट के बाद,
उसे बरकरार रखे। जी हाँ, निहाल के विकेट के बाद छठी ओवर थी, उसमें केवल 1 रन आया। 7वीं ओवर में 5 रन आए और अभी 8वीं ओवर की शुरुआत होते हुए तो देखना पड़ेगा कि यहाँ से कैसे ये दो बल्लेबाज भी लेके जाते हैं इस मैच को। स्पिनर्स की स्पेल की शुरुआत होते हुए यहाँ पे, और जब आप देखते हैं कि ये टूर्नामेंट जो कर्नाटका में हो रहा है, इनमें से कितने ज्यादा प्लेयर्स जो इंडियन T20 लीग में भी खेलते हैं, जैसे मनीष पांडे हो गए, देवदत्त पडिक्कल हो गए, और यहाँ पे मयंक अग्रवाल जो कप्तान है वो हो गए, उन सब के लिए एक अच्छा T20 का परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। और यहाँ पे यूथ की भी ग्रोथ होते हुए दिख रही है, जैसे हमने देखा अभी रोहन कदम को फ्रंट फुट पे आते हुए और ऑन द नीज गए वो, फिर बॉल को सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ मार दिया है। एक बाउंस और चौका वहां पे उन्हें वापस मिलते हुए यहाँ पे रोहन कदम 4 चौके मारे हैं उन्होंने। और जी हाँ, मैं बात कर रहा था यहाँ पे बड़े बड़े जो खेलने के जैसे कृष्णप्पा गौतम हो गए, वो भी ऐसे टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। मयंक अग्रवाल खुद इस मैच में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी टूर्नामेंट उभर कर आती है यंगस्टर्स को टैलेंट अपना दिखाने के लिए, अपना टैलेंट शो करने के लिए। और यहाँ पे ऋषि बोपन्ना एक सटीक गेंद डालते हुए केवल डॉट मिलेगा। रोहन कदम माफ कीजिएगा, यहाँ पे 27 पे पहुंच गए हैं। 22 डिलीवरीज उन्होंने खेली है और वो अभी थोड़ा अपना एक्सेलरेशन दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। उनका पावर प्ले काफी बेहतरीन गया है। और यहाँ पे एक सिंगल लेके किया ओवर की समाप्ति। 8 ओवर हो चुके हैं। यहाँ पे 79 फॉर 1 है लायंस की टीम। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे। और 10 गेंदे 5 रन ये कर सकते हैं पारी को एक आकारित। लेकिन अगर आपको एक अच्छी पारी खेलनी है तो आपको सिर्फ सिंगल्स एंड डबल्स नहीं लेने हैं। कभी कभी हम बिल्कुल इसका विरोधी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ सिंगल्स एंड डबल्स नहीं लेने। एक आध गेंद पर आपको रिस्क लेकर वो चौका या छक्का लगाना ही होगा, क्योंकि अगर आप वैसा नहीं करते तो आप अपने लिए थोड़ी सी मुश्किल स्थिति का एक चयन कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होगा। क्योंकि लायंस 81 पर हैं, 1 विकेट आपने गंवाया है। पहले ऐसी स्थिति थी जब आप 13-14 के एक रन रेट से जा रहे थे और यहाँ पर रनों की गति थोड़ी सी कम होती हुई, लेकिन इतनी भी कम नहीं कि आप 5 या 6 पर नहीं आए। रनों की गति अभी भी 10 के आसपास ही मंडरा रही है। और यहाँ पर रोहन कदम और रोहित कुमार दोनों ने अब ये तय करना है कि शुभंग जो शुभंग हेगड़े हैं, उनके खिलाफ एक रणनीति आंकनी होगी, क्योंकि काफी अच्छी गेंदबाजी की है इस ओवर में। पहले 4 गेंदों में केवल 4 रन दिए हैं, तो पहले ओवर में उन्होंने 5 रन दिए थे। यहाँ पर उन्होंने 4 गेंदों पर 4 सिंगल दिए हैं। तो अगर आप 2 छक्के या 2 चौके अब लगा देते हैं तो ये बड़ा ओवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनको सेटल होने देंगे तो आप ये जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन कर रहे हैं, उनको एक मनोबल उनका बढ़ेगा, एक हौसला बढ़ेगा कि नहीं, मेरे खिलाफ इतना चार्ज नहीं कर रहे हैं तो मैं अपनी लय से भटकूंगा नहीं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता हुआ और ये तकलीफ भरा माहौल जो यहाँ पर है वो है बेंगलुरु ब्लास्टर्स के लिए। देखते हैं रोहन कदम इस आखिरी गेंद पर क्या करते हैं। 9वें ओवर की
ये आखिरी गेंद, पटकी हुई गेंद खेल दिया है ऑन साइड में, डीप में, वहां पर मिड विकेट के पीछे फील्डर है। 9 ओवर की समाप्ति, 85 पर 1 है लायंस। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। स्टैट्स अनप्लग्ड क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिकॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माय शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलोली ऑन। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर हाय, मेरा नाम है बाबा शीश नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन ऐप। क्रिकॉन ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिकॉन ऐप और सुनते रहिए। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष। और यहाँ पे भोपन्ना अपनी स्पेल की कंटिन्यूएशन करते हुए ऋषि भोपन्ना, पहला ओवर काफी अच्छा था और यहाँ पे दूसरे ओवर में भी सिंगल के साथ की है शुरुआत। पहले ओवर में 8 रन दिए थे उन्होंने और अभी एक सिंगल। 86 for 1 है जो शिवमोगा लायंस की टीम है। उन्होंने हालांकि शुरुआत काफी बेहतरीन की थी, पर यहाँ पे जो गेंदबाज है वो एक बड़े टोटल को रोकने की कोशिश बहुत अच्छी से कर रहे हैं। जहाँ पे हमने पहले देखा दोनों बल्लेबाज जो अभी भी एक मौजूद है, रोहन कदम और निहाल, वो काफी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। निहाल उलल 40 रन पे आउट हुए, पर अभी यहाँ पे रोहित कदम को थोड़े बड़े शॉट खेलने की कोशिश जरूर करनी। रोहन कदम की बात कर रहे हैं आप? रोहन कदम को यहाँ पे बड़े शॉट खेलने की जरूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो काफी समय से पिच पे दिख रहे हैं, वो खेल चुके हैं वो बड़े शॉट। जब उनके जो पार्टनर थे निहाल उल्लाल में, वो भी बाउंड्रीज की तरफ जा रहे थे, वो तो काफी एक ब्लास्टिंग नॉक खेल रहे थे। तो रोहन कदम उनका अच्छे से साथ दे रहे थे। और यहाँ पे क्योंकि रोहित कुमार यहाँ पे नए बल्लेबाज आ रहे हैं, तो उन्हें उनका मनोबल भी बढ़ाना चाहिए। उन्हें एक अच्छा, उन्हें वो मोमेंटम देना चाहिए कि आप अभी आराम से खेलिए, आप अभी हौले से खेलिए, बाद में आप भी मारना चालू कीजिए। और यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को
रन्स रोक लेनी चाहिए। हालांकि सिंगल्स तो आ रहे हैं, पर वो एक हाथ 4 अगर ओवर में आ जाएगा तो ओवर उनकी तरफ चली जाएगी, बल्लेबाजों की तरफ चली जाएगी। जहां पे इस बार हम देख रहे हैं बॉलर्स थोड़े से हावी होते हुए। इस बार कट किया था बॉल और शॉर्ट थर्ड का फील्डर एक बढ़िया थ्रो कीपर की तरफ, एक चीकी सिंगल लेने की यहाँ पे दरकार थी दोनों बल्लेबाजों की, और शायद एक रन आउट हो सकता है, पर ये थर्ड अंपायर डिसाइड करेगी, क्योंकि स्क्वायर अंपायर ने तो कहा है ये बड़ी स्क्रीन पे ही पता चलेगा। एक काफी बढ़िया थ्रो, काफी क्विक थ्रो, और नजदीकी मामला है, पर बल्लेबाज आ गए वो अंदर। जस्ट ट्रेन छूटने से पहले उन्होंने पकड़ ली ट्रेन और क्रीज के अंदर घुस गए यहाँ पे। हालांकि मैं फील्डिंग की यहाँ पे तारीफ जरूर करूंगा, काफी बढ़िया फील्डिंग दिख रही है दोनों इस बैंगलोर के टीम से, और बड़े स्क्रीन पर आएगा हरा भरा नॉट आउट। और ये बहुत ही अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट्स अगर आप स्लो रखते हैं तो वहां पर मुश्किल हो सकता था। लेकिन यहाँ पर रोहित कुमार, इन्होंने कॉल ही ऐसा दिया था कि वो तुरंत उस रन के लिए दौड़े। रोहन कदम ने ऐसा एक बहुत ही बढ़िया वहां पर मनोबल उनका बढ़ाया है कि कुछ नहीं, आप पहुंच गए थे तो अब आप वापस कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि 14 गेंदों में आपने 9 रन बनाए हैं। बहुत अच्छी शुरुआत नहीं है, लेकिन दूसरी ओवर पे अगर रोहन कदम और रोहित कुमार ये जानते हैं कि उनमें वो दमखम है कि वो बड़े शॉट लगा सकते हैं। यहाँ पर पटकी हुई गेंद थी, टाइमिंग नहीं थी, क्योंकि अर्ली गए शॉट में, ये बॉल रुक कर आई और ये यहाँ पर एक ही रन। और ये अच्छी बात हो गई कि उन्होंने टाइमिंग नहीं किया था, क्योंकि पीछे वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ एक फील्डर खड़ा था जो कैच पकड़ लिया था। 10 ओवर की समाप्ति, 91 पर 1 है लायंस। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगी जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स नई ओवर, नया गेंदबाज। यहाँ पर एक अच्छी वापसी करने की बेहद ज्यादा जरूरत यहाँ पर है। देखते हैं लोचन अपन्ना, जो राइट आर्म फास्ट मीडियम है कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स के लिए, क्या ये वो ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। कोई भी विकेट लीजिए, क्योंकि विकेट अगर आपको मिलती है तो आपका हौसला वैसे ही बढ़ जाता है। गेंदबाज के रूप में आप जब उभर के आते हैं तो आपको पता होता है कि क्या करना है। यहां पर लगा दिया है एक बहुत ही बेहतरीन 6। ये तो बहुत ही अच्छी शुरुआत की है नए बॉलर के खिलाफ। रोहन कदम अब नहीं रुकने वाले, 39 पर पहुंच गए। 29 गेंदों का सामना करके ये लॉफ्टेड खेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और ये बाकी सारे फील्डर जो हैं प्रेक्षक बनकर रह गए। और प्रेक्षकों के लिए ये बहुत ही हसीन मामला होता है, क्योंकि जब एक बल्लेबाज 6 लगाता है तो बेहतरीन लगता है, और खासकर जब बाएं हाथ के बल्लेबाज लगाते हैं 6 तो वो देखने लायक होता है। ये पैड्स पर थी गेंद, पैरों पर लेग स्टंप के बाहर जब गेंद करेंगे तो उसका जो निर्णय बल्लेबाज करेगा वही होगा। 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 99 रन पर। 10.3 ओवर यहां पर समाप्त हो गए हैं। लोचन अपन्ना का ये पहला ओवर है। पहले 3 गेंदों में 8 रन दे चुके हैं। रोहन कदम खेल रहे हैं 40 पर 30 गेंदों में, और
रोहित कुमार 11 रन बनाए हैं 15 गेंदों का सामना करके। यहाँ पर लोचन अपन्ना देखते हैं अपनी संघ के लिए, अपनी टीम के लिए कोई विकेट यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं क्या। बिल्कुल एक फुलर डिलीवरी थी, बैट के नीचे से सीधा विकेट कीपर के हाथ में गई और यहाँ पर कोई रनों की गुंजाइश नहीं, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। 99 पर 1 है 10.4 ओवर में। जी हाँ, 99 पर 1 है यहाँ पे। 11वीं ओवर समाप्त होने से पहले वो सोचेंगे कि अपना 100 का जो टारगेट है वो हम खत्म कर लेते हैं, फिर यहाँ से जो बाकी के ओवर्स हो गए उनमें 200 की तरफ जरूर कोशिश करेंगे। यहाँ पे दोनों रोहित और रोहन बल्लेबाज, यहाँ पे रोहित कुमार क्लियर करने चाहते थे बाउंड्री, यहाँ पे वो बड़े शॉट लगाने की शुरुआत करना चाहते थे। 11 रन बनाए थे उनने 17 डिलीवरीज में, तो उनको वो मोमेंटम चाहिए था, पर नहीं, आज नहीं, उनका वो दिन नहीं था। टाइम शायद नहीं कर पाए, शायद इतना पावर नहीं दे पाए उस शॉट को, और लॉन्ग ऑन की तरफ मारा और लॉन्ग ऑन के फील्डर ने लपक लिया है। यहाँ पे एक काफी अच्छा कैच, दूसरा विकेट जाएगा। यहाँ पे 99 पर 2 हो चुके हैं और रोहित कदम एक जगह पे पार्टनर्स खोते हुए दिख रहे हैं। 11 पे 11 ऑफ 18 रोहित कुमार और देशपांडे एक काफी बढ़िया कैच पकड़ते हुए अपन्ना को मिली यहाँ पे विकेट, और वो खुश हो गए। वो छक्का खाने के बाद उन्हें एक अच्छी विकेट मिली। पवन देशपांडे एक बेहतरीन काम करते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ, और एक अच्छा कैच उन्होंने लपक लिया है। और लोचन अपन्ना इस ओवर में खुश होके जाएगा क्योंकि आखिरी डिलीवरी उनकी बाकी है। उन्होंने ओवर की शुरुआत में एक छक्का खाया था, और वो छक्का उन्होंने खैर रोहन कदम के बल्ले से खाया था, पर विकेट इज अ विकेट इन दी एंड, तो वो काफी खुश हो गए। अभिनव मनोहर नए बल्लेबाज आते हुए, 31 मैचेस इन T20 करियर्स, 566 रन्स और स्ट्राइक रेट उनका है 155 का, तो ये भी अच्छे एक प्रदर्शन कर सकते हैं। उनकी अभी तो टूर्नामेंट की शुरुआत है, तो अच्छे बल्लेबाज, अच्छी परफॉर्मेंसेस अभी से आप करने लगेंगे तो आप ये टूर्नामेंट में एक बड़े प्लेयर की तरह उभरने की क्षमता रखते हैं। इस बार अभिनव को आउटसाइड दी ऑफ की तरफ डाली यहाँ पे लोचन ने गेंद, और केवल एक डॉट से होगी ओवर की समाप्ति। यहाँ पे एक मैं कहूँगा गेंदबाजों के लिए एक बढ़िया ओवर, 11 ओवर हो गए समाप्त। 99 for 2 है लायंस। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे। और मेरे पर्सनल Rishi Bopanna to bowl the 12th over of the first innings, 99. The score 100 for 2 now in 11.1. They should have reached there by the 10th over, but nevertheless, 100 on the board will give you immense confidence and the momentum to build your innings to a good score now. Abhinav Manohar, he is no mug with the bat. He is a prominent name in the domestic circuit in India, and everyone knows what caliber he possesses. When he is in best of his touches, he will always take chances against all the bowlers. And now a dipping delivery, a fuller in length, but it was an effort to bowl a cutter, but the batter was early to judge the ball, and it was a very nicely played delivery at the end. And now they have to make sure that they reach at least 190 from here on, if not less. And beautifully played towards the square leg region for a single, and it is going to be the important knock from Rohan Kadam, which will have an impact on this game from here on, because he's batting on 41, and he is just known for carrying his
form towards the end of the 20 overs. Now, a quicker delivery, a bank shot delivery, and it just missed the outside edge of the bat. The batter wanted to cut the shot towards the square leg region, but not connecting it at all. And it is a dot ball, a rare dot ball. Rishi Bopanna is taking quick actions, not allowing the batter to settle down. A couple of balls remain in the 12th over. 101 for 2 are the Lions. Yes, and now Kadam would be having that responsibility, Rohan Kadam, to go to build on a partnership here. Abhinav, as rightly said by my partner Swapnil, he is known for his good batting. Earlier on against the Mysore Dragons, he scored a brilliant 50 of just 24, and he has that blastering capability. And now, from here on, when you are in your 12th over, you are ending your 12th over, and you have a 100+ score, 200 is required, I would say. And they wouldn't be happy. The Shivamogga Lions wouldn't be happy if they don't get that 200+ or 190+ score. This time, just placed by the batter to take a single. And that will be end of the 12th over. It is 103 for 2 for the Shivamogga Lions. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे। आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज Single to start the fresh over, and it is going to be a test for the bowlers now, because both the batters are now into not both the batters, but Abhinav Manohar is a prominent a set batter, because he looks so confident at the start of the innings also that you look at him and you say, okay, he can start the hittings at his will. And 42 runs is the score to Rohan Kadam, who has come down as an opener, and he is into a good frame of mind to start the hitting process now, as Shubhang Hegde is bowling his third over. He's given out only 11 runs. He's without a wicket, but the Lions will try to just see him off and take the chances against other bowlers, because if they lose wicket, they lose momentum once again, and that is the reason they will not like to take any fancy chances against Hegde. And it is good to see that a young spinner is asking those questions to the batters, because if at all he gets one more wicket for his team, and first for him, it will be a great setback for the Shivamogga Lions, because here he goes and leading edge, taking it towards the long off region, not a prominent of the shots, not a confident of the approach against Shubhang Hegde, but nevertheless you have to play those deliveries which are coming your way. 12.4 overs, it is 107 for 2, and it is Rohan Kadam who took that single, and Abhinav Manohar is batting on 4 runs now of 6 deliveries. Beautifully that is done, beautifully defended, and it is that phase of the match where you need to understand that these overs will go in quickly. You only have to maintain the momentum that you've carried from the ball number 1. And now Abhinav Manohar gets it towards the long off region for a single to end the over. 13 overs done. 108 for 2 are the Shivamogga Lions. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado.
exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe. And Lochan, it is coming back after a very good over by him. Yes, he got the breakthrough which was needed for the Bangalore Blasters. And now Shivamogga Lions team are on the back foot a bit. They have taken a few momentums back here. If we compare this innings and their power plays innings, it is a stark difference, I would say, a very, very stark difference, where at one point of time it was Rohan Kadam and Nihal who were just striking the ball left, right and centre. And now from there, it has been just singles. Yes, singles are important, and mind you, my partner also has said that singles are needed. But in that over, to keep up the run rate which was started on, they will be needing at least a boundary. And those are now scarce and far off. If we see the last boundary was in the 11th over, in the 10th over, when the wicket also fell off. And now from here it has been just single and dot and single and dot, not even doubles for that matter, not even a couple of runs are taken. So it is the bowlers who are possessing some force here. They are bowling quite brilliantly, and Rohan Kadam will be having that responsibility to accelerate from here, to pick up the pace, as there has been just confusion, as this time there was a run out chance, and both Abhinav Manohar and Rohan Kadam on the middle part of the pitch did not know what they needed to do. In the end, an overthrow helped them to go back to their crease, and now it is Rohan Kadam who wants to clear the boundary, who took the aerial route and has cleared the boundary quite so well, quite over the bowler's head, and it will be a 50, a very good 50 by Kadam here, 51 of 37 with that sixer, and he is celebrating, showing the blade to the partners of him in the dugout, and he is showing that yes, now that the tournament has started, I have that potential. And he truly has that potential. Why wouldn't he celebrate? Because he has been a part of the opening partnership along with Nihal Ullal for 65 runs, and then after that he has been a prominent partner of this of the other partnership that a small one that he had with Rohit Kumar. But then it is you who have to nurture yourself in the deliveries that you face, and this is a result. See, Rome was not built in a day, so these big hittings are not like you go enter and you start hitting. It is just you take the exact idea of the pitch, of the ground, you get yourself acclimatized to whatever is happening, and then you go for the big shots. And that is the reason why people succeed in the second half of the innings, because from over number 10 you need to just apply what experience that you have gained in the first 10 overs, and they were at 90 odd runs in the first 10, and from that it is no stopping for these batters, as this over started with 1 wide, 3 singles and couple of sixes followed by 4 to end the over. As many as 3
12, 15, 19, 20 runs in that over from Lochan Appanna. It is 128 for 2 in 14. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. And it is Shubhang Hegde now who's arrived here. And Rohit Kadam, as said by me, I think they know that what their planning was after the middle overs where the spinners were dominating. Now moving on towards the slog over, we are in the 15th over, mind you. So more 5 after this. So it is important for Kadam now to accelerate as he has shown. He started off with a 6, got his 50, then again a 6er. And then a 4 to end the earlier over. And now Abhinav Manohar. 11 of 8. He is taking his time. He is waiting for the right deliveries. No boundaries of him now. Will he also start going to the boundaries? As Shubhang Hegde is looking in a quite a good pace. But it is Abhinav Manohar who is listening to me. I guess so. Or it is just some kind of connect or something like that, as he goes brilliantly for a 6 straight over the bowler's head towards the screen in front of him. And what a shot. He is quite capable of fast innings, as we earlier saw in the matchup against the Mysore Dragons. 50 of just 23. He knows how to strike the ball and strike the ball quite so well. This time he respects the bowler, plays it defensively. And it will be a dot. Last ball of the over. This over also has gotten that 1-0 6er. And will Abhinav Manohar end this over with a big shot or not? We'll have to wait and see, as the last ball of the over has been bowled by Shubham. And he wants to cut the ball towards the deep third, but couldn't place the ball, position the bat so well. Any which way, he would be getting a single to end the 15th over. It is 137 for 2. The Chivamonga Lions. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through. 16th over in progress, 141 for 2 is the score, and Bopanna is welcomed in his last over of the spell with a boundary. And see, this is what I was talking about. Even the toe ends are now flying to the boundary, as a front foot pull from Abhinav Manohar has taken the ball to the boundary line, and he is getting into the act slowly and steadily. 15 balls for his 19. 141 for the score is a good look in the 16th over, and the partnership of 42 in 27 has nurtured their innings so far. And this is the 16th over of the match, where of the first innings, where you have a batsman who is on 62 or 41. A bright chance for him also to go for the 3-figure mark, but that will not be the first motive on the list in his mind. The first motive will be getting some big runs
and a momentum building end to this innings, as the third ball also is been ferociously hit towards covers region, and there was a sweeper cover, but the ball had timing immensely plated on it to take it towards the boundary line. That was a brilliant follow from the left-hander after his right-hander partner had just pulled a ball towards the deep mid-wicket for the 4 to start the over. That is the reason where we just make everybody understand that cricket can be sometimes very, very torturing for the bowling team when you select to field first after winning the toss, and this is what can happen if you let the other team go berserk against you. And that was away going delivery towards the off stump line, a couple of runs added to Rohan Kadam and the Shivamogga Lions total. This is an over where you will make most of it, because 18 deliveries will remain after a couple of the this overs remaining deliveries. Talking about Rohan Kadam, let's be fair and square. He took his time, but the way he started, the way his innings flourished after the power play or towards the 10th over has been very, very commendable. Now it is up to the last ball of the 16th over that should be bowled comfortably, and the partnership of 50 of 31 deliveries to Rohan Kadam and Abhinav Manohar. What would be going in Mayank Agarwal's mind is the question I have asked in 15.5, and I expect an answer when we come back to cover 16.1 from Shaurya. Now this is under the fielder, who was inside the circle at the point region, and a couple of runs to end the over. It is 151 for 2 in 16 overs. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app.
Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crick On. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious. Doesn't really matter if you're on 69 or you are on 9. The shots that he's playing today are very, very good to watch. There was only a fielder on the offside towards the covers region and he had to cross that. But he was very agile and alert. Was Captain Mayank Agarwal for the Bengaluru Blasters team. So he decides otherwise. He pulls the ball in front of the square towards the wideish long of, or say the cow corner region, to get a single and allow him to go to 70 runs in 46 deliveries. Abhinav Manohar on the other hand is batting on 22 of 17. This is the third over for Pradeep T. He has given out 26 runs in 2.2 overs that he is bowled. So my question was to you, what would be going on in Mayank Agarwal's mind, having a look at the scorecard? The Lions been asked to bat first, 152 for 2 in 16.2. At this point, Mayank Agarwal will be thinking that how to get Rohan Kadam and Abhinav Manohar's partnership to an end. Because at this point, they are just flowing on runs. They are giving out quite a lot of runs. And the bowlers are ending up making mistakes, as this time T. Pradeep, trying to bowl outside the off stump, wanted to keep the ball away from the batter Abhinav Manohar, known to strike the ball as well, and failed quite so miserably. He ended up giving a wide out there. So this is needed. He would be talking to his bowlers, wanting to keep up their momentum. He must be knowing, he is a Bangalore boy. He must be knowing how this pitch at Chinnaswamy is working currently, and he would be wanting an end of this partnership and how much less we can give out in runs here would be his aim. As at this point, 154 for 2 is the score. We are in the 17th over, and now it is Rohan Kadam who is just playing on quite so beautifully. 70 of 46, 3 sixes and 6 fours for him. So his wicket would be more important, in my opinion, out there for Mayank Agarwal. Looking for a 200 towards the end of 20 overs? Possible? Possibility is quite high, I feel that. Because at this point, both the batters are looking in a good flow. And with Rohan Kadam's keeping his wicket, 200, 215 would be a thing. But I think I just jinxed that. Rohan Kadam wanting to clear the field at the offside and gave it a very, very easy catch to the covers fielder, and that will be the end of Rohan Kadam. 70 of 47 by him, a very sensible and a very good knock here, but that will be delightful for Mayank Agarwal. Yes, and Mayank Agarwal takes a catch with open heart and open hands. So Pradeep T getting the all-important breakthrough in his third over, and he has given his captain a chance to smile, because it was just getting on to his skin. And if we look at what he played, was brilliant for a batter. And 366 boundaries in his 70 of 47 deliveries, making sure that he did not give any chance. And where you get to see a partnership. The second wicket fell on 99. So partnership of 55 runs coming to an end. Good thing is that they have lost a wicket when they are having enough runs to go for the kill and go for the big shots now. They need not rest for the remaining 20 deliveries. Shivaraj S is the new batter, and he is sent ahead of a few, because they want. He's come ahead of the captain Shreyas Gopal, because he knows that big hits are required, and the first ball is a dot ball that he faces, and this is a wicket ball, full over pitch delivery, just taking the bottom edge of the the toe end of the bat, and the shot was executed to perfection, but there was a fielder in the middle at the covers region. So a good catch to the captain Mayank Agarwal, making it
difficult for the batter Rohan Kadam to get to the boundary. So a wicket going down, 154 for 3. This is the last ball of the 70th over coming up from Pradeep T. He's given out 28 runs, but he's got all the important wickets that have fallen in this innings, because he's got both the openers now under his belt, and it is ruined towards the covers for a second. Also, they come comfortably. End of the 17th overs, it is 156 for 3 for the Lions. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an... It is now Kumar who comes in to bowl his third over, and Abhinav starts off quite so well. He welcomes him rather with a sixer out here. Abhinav Manohar, he knows that he has the capabilities of going for the big shots. He has done that in the earlier match, and he wants to continue as he goes straight and quite straight towards the side screen for a sixer here. And Kumar has been welcomed with a 6. It is 162 now, and the total with Abhinav and Shivraj batting can be still going towards the 200 point, and 200 point will be really important for Shivamoga Lions, because they have the start, they have the middle part, and they would be wanting to end the innings quite so well. This time a bouncer of a delivery, too bouncy, and it would be given as a wide. A lot of height to that, and it would be L.R. Kumar who would be wanting to curb Abhinav Manohar more than anything at this point. 29 of just 19 and 2 sixes already with his bat here. Yes, and 2 sixes to him, and we saw that ball which it took a rise after it pitched. So, but he went for that cut shot over the keeper's head. He did not want to just only be settled by that wide or only a single extra that would be achieved, or he wanted to go over the keeper so that he could have got 4 runs under his name for his team. For the time being, they're going at a good rate, 17.2. They are 165 for 2. One or a couple of sixes more here will just make sure that they are into the hunt of 200 for the first innings to be scored. With the 200, what you take to the dugout in the innings break is the confidence that you allow your bowlers to be in the game all the time. That is the slower one. He rolled his fingers and he's giving him a send-off and a wicket there to L.R. Kumar. Rolling the fingers means that you are allowing the ball to be in a very different a different trajectory altogether. And when it pitched, it just did not go on the height that was expected by Abhinav Manohar, and he got the inside edge straight to the stumps. So against run of play, it is a wicket going down. Yes, sorry. Yes, and L.R. Kumar, quite a smart over by him. He bowled, he went for a sixer and then the wide, a very quick bouncer. After that, Abhinav Manohar was expecting a bouncer like that, but then he rolled his fingers, and it is what it is now. It is the wicket of Abhinav, and 2 new batters. Will the 200 will be getting, or the bowlers of Bangalore Blasters stopping that to do so? Shivraj has already arrived. 3 balls which he has faced. He has 2 balls which he has faced. 2 runs, and now new batter would be arriving. I think it would be the captain of the
Shivamonga team, Shreyas Gopal. No, it is Kranti Kumar who has arrived, and still the question arises, Swapnil, why isn't Shreyas Gopal as a captain coming in? Might be that reason where you trust the sloggers in your team, the all-rounders who can just throw the bat, and if you are confident enough to give them a chance to have a go at the bowlers, you can always have the leisure to do that. No specific reason can be stated for Shreyas Gopal not coming in to bat, because that's team strategy that you decide when you are selecting your 11, demands your all-rounders to go out and perform. With Kranti and Shivaraj, they're on the crease, always will be on the cards, those big runs, but the bowling is now seeming a little difficult because all the important batters are bad who are playing good. Apart from Rohit Kumar, who departed on 11, all the first 4 have got those runs: 70 to Rohan Kadam, 40 to Nihal Ullal, 31 to Abhinav Manohar. So 3 prominent batters getting into the 30s, one of them going to 70 and one of them going to for 40. But here it is up to S. Sivaraj and Kranti Kumar to take charge on the remaining 13 deliveries. Last ball of the 18th over coming from L.R. Kumar to Kranti Kumar. We'll see what the result is. Banked in short, played it towards the deep mid-wicket region for a single. And that is the end of the 18th over. 168 for 4 are the Shivamoga Lions. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing 168 बन चुका है 4 विकेट के नुकसान पर शिवमोगा लायंस के लिए। और यहां पर प्रदीप टी अपनी आखिरी ओवर अपने स्पेल की करते हुए 32 रन खर्च कर चुके हैं। 3.1 ओवर में 18वीं जो ओवर हुई थी उसमें एलआर कुमार ने एक बहुत ही बढ़िया विकेट प्राप्त की अपने संघ के लिए। और यहां पर देखिए ग्राउंड का थोड़ा सा हाल दिखाई दे रहा है, शायद यहां पर प्रॉब्लम हो सकती थी ऋषि के लिए जो गेंदबाज रह चुके हैं पहली। और यहां पर एक चौका लगते हुए सीधा एकदम साइड स्क्रीन की दिशा में अगर आप खेलेंगे तो कोई भी फील्डर वो पकड़ नहीं पाएगा। चौका आपको बहुत ही अच्छी एक स्थिति प्रदान करेगा। 174 हो चुका है स्कोर 18.2 गेंदों में। और क्योंकि आपने ये रन पहले से एक अच्छी साझेदारियों के रूप में बनाए हैं तो यहां पर आपको अगर आंख बंद करके भी बल्ला घुमाना है तो उतनी आपको थोड़ी सी सहूलियत मिल सकती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर प्रदीप थोड़े से महंगे साबित होते हुए चौथी ओवर कर रहे हैं अपनी। 3.2 गेंदें हो चुकी हैं, 36 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। तो दोनों भी ओपनर्स को उन्होंने डगआउट में तो भेजा लेकिन थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। और T20 में आपको दोनों जगह से एकदम स्थिर और एक बहुत ही बड़ा उदाहरण दूसरों के लिए पेश करना होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने 3.3 ओवर में 37 रन दिए हैं तो शायद आपको ही ये दिन खासा नाराज करने वाला होगा। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि लायंस एक सुस्थिति में है, 175 पर 4 हैं। और अब शायद मयंक अग्रवाल सोच रहे होंगे कि क्यों मैंने पहले बल्लेबाजी नहीं ली। फिर एक बार यहाँ पर एक ऑन ड्राइव उन्होंने खेला जरूर है वहां पर, लेकिन लॉफ्टेड था और काउ कॉर्नर रीजन में गया। 1 रन प्राप्त हुआ। 176 पर 4, 2 गेंदे इस 19वें ओवर की शेष हैं। प्रदीप टी जो
ये चौथी ओवर अपनी स्पेल की कर रहे हैं। 38 रन देकर 2 विकेट हासिल किए हैं, लेकिन अब ये नहीं सोचना होगा एस शिवराज और क्रांति कुमार को कि कितने विकेट गए हैं, कितने जा सकते हैं, कितना क्या ये वो। आप बिल्कुल इस गेम के बारे में सोचिए जहां पर आपको बल्ला घुमाना है और रन अपने संघ के लिए बटोरने। 176 पर 4, ये 19वीं ओवर की 5वीं गेंद और ये लगा दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का। बहुत ही बढ़िया कदमों का उपयोग किया और वहां पर डिपॉजिट कर दिया स्टैंड्स में। ये एक बेहतरीन पारी का नजारा हमें देखने मिल रहा है। ये कौन है जो मार रहा है? क्रांति कुमार, बिल्कुल संदेह नहीं। चीते की चाल, बाज की नजर और क्रांति कुमार के षटकार पर संदेह नहीं करते। ये अपने हाथ खोल दिए और छक्का लगा दिया है। आखिरी गेंद अब होगी 19वें ओवर की, लेकिन स्कोर बन गया है 182। क्या 6 रन और प्राप्त करके 188 पर लेके जाएंगे 19 के ओवर के समाप्ति के पश्चात, या आप विकेट खोएंगे और 19वें ओवर में कोई नया बल्लेबाज हमें दिखाई देगा। देखते हैं। ये आखिरी गेंद 19वें ओवर की, फुल टॉस डाली गई थी गेंद और खेल दिया है उसको डीप मिड विकेट नहीं, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, और उस लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर की जन में 2 रन प्राप्त होंगे। यहाँ पर काफी अच्छा ओवर, 8-2-10 और 16 रन इस ओवर से। 4 ओवर में 46 रन देकर 2 विकेट लिए हैं प्रदीप टी ने। लायंस का स्कोर है 184 पर 4 19 ओवर के बाद। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त। और यहाँ पे एलआर कुमार को शुरुआत करते हुए शिवराज, वो जो अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। यहाँ पे दोनों बल्लेबाज, शायद मैंने जो सवाल पूछा था स्वप्निल ने एकदम सटीक उसका जवाब दिया है। श्रेयस गोपाल भी बल्लेबाजी करते हैं काफी अच्छी, पर उन्होंने ये 2 बल्लेबाजों को आने दिया है यहाँ पे क्योंकि वो एक हेवी हिटर्स है और वो बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने चाहते हैं। क्रांति एक एंड से क्रांति कुमार 17 रन पे पहुंच गए, केवल 7 गेंदें खेली है इस बार। शिवराज भी ऊपर हुक करने की कोशिश कर रहे थे, एक बाउंसर थी और मिस कर दिया उन्होंने। कीपर के पास गए, कीपर थोड़ा मिसफील्ड कर बैठे और एक यहाँ पे एक चीकी सिंगल लेते हुए दोनों बल्लेबाज, एक सिंगल बाइस होगा और क्रांति कुमार अभी आएंगे स्ट्राइक पे। तो वो तो जरूर कोशिश करेंगे ये 10 रन जो उन्हें चाहिए, 10 नहीं 11 रन जो उन्हें चाहिए ये 200 का टोटल बनाने के लिए, वो जरूर इस आखिरी ओवर में ले पाए, क्योंकि यहाँ पे अभी मैच काफी बढ़िया बनते हुए दिख रही है बल्लेबाजों को। और क्रांति कुमार ने घुमा के मारा है ये शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में और ये एक बेहतरीन छक्का होगा। 95 फॉर 4 है और क्रांति कुमार वो 200 के ऊपर भी अभी जाना चाहते हैं। ये एक बढ़िया बैटिंग दिख रही है उनकी तरफ से। क्या बात है ना कि जब आप सोच रहे होते कि शायद 200 बनेंगे, यहाँ तो अभी बिल्कुल 200 बनेंगे ही। और ऐसा मैं सोच रहा हूँ, मतलब कुछ भी हो सकता है। 3 गेंदें बची हैं लायंस के लिए। 195 ये स्कोर है अब तक। शिवराज 8 पर ही है। क्रांति यहाँ पर अलग सी क्रांति लाने की कोशिश उन्होंने की और काफी हद तक सफल भी हुए। यहाँ पर जरूर 2 रन लेंगे। तेज दौड़े और वहां पर 2 रनों का इजाफा वहां पर हो गया है। 197 4 विकेट के नुकसान पर 19.4 गेंदे। बहुत ही बैक टू बैक 200 रन वाले हमने मुकाबले आज देखे, इसको तो कवर भी किया है। तो ये जो चल रहा है वो उस हद तक गया है कि आपने पहले गेंदबाजी स्वीकार की और फिर आपने जिनको न्योता दिया बैटिंग करने के लिए
उन्होंने जड़ दिए 200 रन पहले गेंद में और पहली इनिंग में। और जब आप ये सोचते हो कि क्या होने वाला है इसके बाद, आप आएंगे बल्लेबाजी करने को और आपके लिए प्रति ओवर 10 रन से ऊपर का एक अमूमन नजारा होगा प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पर 9 गेंदों में 10 गेंदों में 25 रन की एक बहुत ही आक्रामक पारी खेलकर आउट हो चुके हैं क्रांति। और एक गेंद शेष है, क्या उस शेष गेंद में 1 रन 2 रन या 3 रन आ सकते हैं? ये सवाल होगा 200 रन का। और यहाँ पर थोड़ी सी पहले खेल गए, टो एंड पर लगी, काफी ऊंची गई, डिस्टेंस नहीं प्राप्त किया और अपने आप से नाराज, क्योंकि ये तो होना ही था। आपको ये बड़े बड़े शॉट लगाने ही हैं। और आएंगे नए बल्लेबाज, देखेंगे कौन है वो। 197 पर 5 है क्रांति कुमार। आपने आपका जो किरदार है वह खूब ही निभाया है, 10 गेंदों में 25 रन बनाकर। और शायद ये एक ऐसा चरण है इस मुकाबले में, पहली इनिंग में, जहां पर आप सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है एक अच्छा स्कोर। और यहां पर आप बोल रहे हैं कि 197 पर 5 है। ये होता है T20 का असली स्वरूप। जब आप बोलते हो कि अच्छा स्कोर क्या है, जब आपने बनाए हैं 197 और कर दीजिए 201, तो बिल्कुल इसके पहले जो मैच हुई थी उसका जो स्कोर था वही स्कोर यहां पर हो गया है। 201 रन पर 5 विकेट गवाकर पूरी 20 ओवर खेलकर यहां पर लायंस की टीम जाएगी डगआउट में। और प्रणव भाटिया एक गेंद के लिए आए थे और उस गेंद में उन्होंने लगा दिया है चौका। समाप्त होती है पहली पारी। और क्या बात है। जी हाँ, और अगर हम बैटिंग की बात करेंगे तो रोहन कुमार ने तो एक बढ़िया इनिंग्स के लिए 70 रन बनाए उन्होंने 47 बॉल्स में, 6 चौके और 3 छक्के। उनकी और रोहन की और निहाल की पार्टनरशिप, निहाल उलल की पार्टनरशिप काफी बेहतरीन थी। निहाल उलल 40 रन केवल 17 गेंदों में, 4 चौके और 3 छक्के। रोहित कुमार आए, पहले थोड़ा धीमा खेल रहे थे पर अपनी विकेट खो बैठे 11 रन पे। 11 रन उन्होंने बनाए 18 गेंदों में। फिर अभिनव मनोहर एक अच्छी पारी के बाद आते हुए 31 रन बनाते हुए 21 डिलीवरीज में, 1 चौका और 2 छक्के। साई शिवराज 8 रन 6 गेंदों में उन्होंने बनाया, 1 चौका जरूर उनके बल्ले से निकला। क्रांति कुमार ने भी ला दी थी क्रांति यहाँ पे 25 रन 10 गेंदों में, केवल 10 गेंदों में, और 1 चौका और 2 छक्के। फिर प्रणव भाटिया 1 और 4 उनकी तरफ से, एक डिलीवरी खेली और 1 चौका मारा। और एक्स्ट्रास की बात करें तो 12 एक्स्ट्रास दी गई थी। और बॉलिंग की बात की जाए तो विद्याधर पाटिल ने 2 ओवर किए, 31 रन दिए, कोई विकेट नहीं प्राप्त किया। टी प्रदीप ने एक अच्छी वापसी की थी लेकिन 4 ओवर में 2 विकेट लिए, 46 रन देकर। कुमार एलार ने एक किफायती गेंदबाजी पहली 2 ओवर में की थी लेकिन बाद में उनकी थोड़ी सी पिटाई हुई, 2 विकेट लिए, 4 ओवर में 38 रन खर्च किए। शुभंग हेगड़े बिना किसी विकेट के उनके 4 ओवर किए, उन्होंने 25 रन दिए। ऋषि बोपन्ना अच्छे थे लेकिन 8 प्रति ओवर के हिसाब से 4 ओवर में 32 रन दिए, कोई विकेट प्राप्त नहीं किया। लोचन अपन्ना 2 ओवर डाले, 1 विकेट लिया, 28 रन खर्च किए। तो ये है पहली पारी का हाल। 201 पर 5 ये स्कोर बन गया है इस टीम के लिए। और देखते हैं क्या हो सकता है आगे जब हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और देखेंगे किस हद तक जाएगी बेंगलुरु ब्लास्टर्स की टीम इस 202 के रन का पीछा करते हुए। देखते हैं, जुड़ते हैं इस ब्रेक के बाद। You are listening to Flash News, brought to you by Crickcom. Hello, cricket fans from around the world. Welcome to another exhilarating episode of Flash News, your go-to source for the latest and most captivating updates from the cricketing universe. I'm your host, Isha, and I am absolutely thrilled to take you through the roller coaster ride of stories that have been making waves in the cricketing world. So without further ado, let's dive straight into today's headlines. Brace yourselves, as two cricket stalwarts are making their way back to the international scene. KL Rahul and Shreyas Iyer, two power-packed middle-order batsmen, are gearing up for a potential comeback to the Indian national team.
In an intra-squad simulation match held at the National Cricket Academy in Bangalore, both Rahul and Ayyash showcased their skills in fine style. Rishabh Pant, our very own wicketkeeper batter, gave us a sneak peek through a video on Instagram. The duo seemed to be in their elements, perfectly coordinating seamers and showing their readiness to take on the big stage once again. With the ODI World Cup and Asia Cup on the horizon, Captain Rohit Sharma and the brilliant Rahul Dravid are laser focused on getting these two gems back to their best. The Asia Cup is set to kick off on 30th August, and we can't wait to see these powerhouses shine on the field. Keep those fingers crossed as the selection committee, led by Ajit Agarkar, prepares to announce the squad for the Asia Cup. And let's not forget, a special training camp is lined up in Bangalore to fine-tune the team's skills before the action begins. Cricket fans, mark your calendars. The countdown to the much-awaited 2023 ODI World Cup has begun. But hold your horses, the ticketing strategy this time around is going to be a bit different. BCCI and ICC, the masterminds behind this spectacle, have decided to release tickets in phases. Why, you ask? Well, they're aiming to prevent ticketing websites from crashing due to overwhelming demand, a lesson learned from the past. Tickets for non-India matches will hit the stands first, allowing fans to secure their spots for these clashes. And there is more. As the event unfolds, you'll have chances to snatch tickets for India's upcoming battles, including the high-voltage clash against Pakistan on 14th November. The T20I series between India and West Indies didn't go exactly as planned. And with that, the scrutiny over Hardik Pandya's captaincy and form has reached new heights. The series loss has former wicketkeeper batter Parthiv Patel expressing his concerns, stating that Hardik Pandya is still a work in progress as a captain. The spotlight falls on Pandya's strategic decisions and bowler utilization. Patel highlighted instances where Pandya's choices seemed questionable. But let's not forget, cricket is a team sport, and every player, captain included, learns from experiences to grow. On the batting front, Hardik's performance wasn't up to the mark either. The upcoming Asia Cup and series against Australia hold the key for him to regain his form and contribute significantly with the bat. In the world of fast-paced comebacks, Australia's captain Pat Cummins is gearing up for his return to international cricket. Recovering from a left wrist injury, Cummins has his eyes set on the 3-match ODI series against India, scheduled for late September. After a successful surgery and a well-deserved 6-week rest, Cummins is all set to miss Australia's ODI series against South Africa. But fear not, the iconic pacer is determined to make a grand comeback against India. What a treat that would be for cricket enthusiasts worldwide. The upcoming ODI series will be a vital preparatory ground for Cummins and his team ahead of the World Cup. So, fans, keep those cheers and best wishes ready for the return of this cricketing powerhouse. Cricket fans, the wait might soon be over. Australia's regular skipper, Meg Lanning, who took a break from cricket due to medical reasons, might be gearing up for a comeback. Stand-in captain Alyssa Healy has given us a glimpse of hope, stating that Lanning is recuperating well and might make her way back for the series against the West Indies in October. Lanning's absence has been felt, but her return would undoubtedly add a new dimension to the Australian team's dynamics. As we eagerly await her return, let's keep our fingers crossed for some exciting cricketing action. In a strategic move that has taken the cricketing world by surprise, Wanindu Hasaranga, the master of wrist spin, is reportedly contemplating retirement from Test cricket. With franchise cricket's influence growing rapidly, Hasaranga is looking to optimize his contributions in limited overs formats. The Sri Lankan sensation aims to channel his skills and energy into elevating his national team's performance in the shorter formats, where he has truly excelled. His potential retirement from Test cricket marks a significant chapter in his career, and we're excited to see how his journey unfolds. And that's a wrap for today's episode of Flash News.
I hope you enjoyed the whirlwind tour of the cricketing headlines that are keeping us all on the edge of our seats. Stay tuned for more engaging podcasts and intriguing updates from the world of cricket with CrickCom. Until next time, keep that cricket fever alive and keep listening to Flash News. This is Flash News, brought to you by CrickCom. And the chase is on, and the chase is on quite so well. 202 required for the Bengaluru side to get this victory. The openers are arriving on the crease. It is going to be a big task for them to get this match unfolding. And yes, it is a big scoring game in the Chinnaswamy. We earlier saw that 201 was put up on the board and 201 was chased quite so well. So can the Bengaluru Blasters and the team of Mayank Agarwal would do that, as he himself arrives on the crease with the opener Bhuvan
out there, and it is a spin spell to start off the first over for the Shiva Munga Lions. It is Shreyas who is bowling the first over, and we start off well. This is the first ball of this innings is a dot. It is Bhuvan and Agarwal who will be wanting to score that 1 or 2 runs here. The second ball as well, a quicker delivery by Shreyas Gopal, the captain, and just spinning towards the off here, and it was Bhuvan Raju who couldn't pick that up this time towards the stump, and again a dot. So 3 dot here, quite contrary to the first over of the first innings, and this time a run out chance. It was Agarwal who was trying to take that single. It was Mayank Agarwal who was trying to take that single, and the fielder showing quick hands and threw very fast to the keeper, and there is a big run out chance here. The keeper towards the short third region after an overthrow, I mind you say. So can this be out? Can this be a breakthrough? Can this be a breakthrough? Yes, it is. Yes, it is. And who will it be? I think it is Mayank Agarwal who will be not facing a single ball here, and will be just needing to confirm that. Yes, it is Agarwal who will be going back to the pavilion without even facing a ball. So that is not a good start for the Bengaluru Blasters, because OUT reads the screen, and at both the ends there was a chance, because first the ball was in the hands of the fielder. He threw it towards the bowler's end, Sarath, and he did not get a direct hit. But then after they ran for the run, they ran for a single, and there it was in the keeper's gloves in no time, and that was a run out, been just a part of the daily routine as if for the fielder. And now, without facing a delivery, Mayank is departed, and what a start to this chase by Bengaluru Blasters, because the stage was set for Mayank Agarwal's batting. Jeshwant Acharya. Okay, I'm getting it started. Jeshwant Acharya, the new batter, wouldn't have expected to enter the field on a very short notice. Only 3 balls that have been bowled in the first over, and 0 for 1 for the Blasters. They require 202 runs to win, 201 to be precise, to win from now on. They've got the single that they wanted. But yes, nevertheless, any wicket would help. Stumping, run out, hit wicket, handle the ball, anything would actually work, because as far as it is a wicket, it is the it is very simple statement that, see, you got to look at everything. Had the ball not ricocheted, it wouldn't have been a wicket, because the ball ricocheted after it hit the stumps on the non-striker's end. It went to the fielder at short third, and then he was very quick to release it towards the keeper, right exactly over the stumps, and then the batsman was found wanting of that space which was required to clear. So Jeshwant now has to make sure that he gets into the scoring very fast with Bhuvan Raju. Let's see what happens here. A ball that is spinning inside. Shreyas Gopal starting with spin straight away. End of the first over. A maiden over to start the proceedings, and a wicket in that over. Just enough to set the tone. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to the heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary
covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the... Now it is Kaushik V who has arrived after that brilliant over by his captain Shreyas Gopal. He is here to start the fast spell. Shreyas Gopal from the other end is spinning the ball quite so well, and now, I mean, look at the odds here, and I would always congratulate the fielder who was standing in the short third. And while I was talking about that, it is double the wicket here, and this time it is Kaushik Vasuki who bowls outside the off stump, and the ball swinging outside, and it was Bhuvan who was trying to hook the ball, who was trying to cut the ball, completely missed the ball, but the bat just kissed away to go to the keeper, and keeper making no mistakes whatsoever to take in that catch, and it is misery after misery, and mind you, 0 runs have been put up on the board, and 2 wickets have already gone, mind you, and the chase is of 102. So a situation 202, I'm sorry, and the chase is of 202, and this match at this point is not at all towards the Bengaluru side, as the captain goes away, the captain departs, and after that the opener with him, Bhuvan, also departing now. Bhuvan Raju, 0, a duck for him, and a duck for the captain. So no runs still on the board. Jaswant Acharya is batting, and a brilliant ball there by Kaushik V. And I was talking about the earlier run out there. The fielder at the short third had such a focus in the game that he went for the ball there and was sure that there is a chance of a run out of the thin air, and he took that chance and took that wicket. And now the Shivamonga team is looking in a brilliant position from here. Yes, Shivamonga team are looking in a good position. Pawan Deshpande, who will have to now shape, at least get the first runs on the board, and then think about going for the kill, as the little deviation after it pitched and went away from the batter. Just a little deviation, putting the batter in 2 minds whether to go at it or whether to leave it was a question. Now again, a wider delivery, no foot movement, and that caused the wicket of the batter Raju, who departed. Bhuvan Raju without scoring without troubling the scorers, and scoring has been not yet started. 0 for 2 in 1.3. How many times you see that in a T20 game? Oh, again, very close to the outside edge, and he's asking questions. Pawan Deshpande needs to be very thorough with whatever he's doing. The application of the bat towards the ball needs to be controlled, and also one thing that needs to be kept in mind is that when you are playing a swinging delivery, just make sure that your foot is moving along with your bat. Otherwise, you'll be stuck at the same place, and you will have no, proper approach towards the delivery. Now, once again, a banged in short delivery. First runs on the board, and that is a good pull backward of the square. In the deep, there was no protection, and the first runs in the boundary for the Bengaluru Blasters from the bat of Deshpande. Yes, very good shot there by Deshpande, Pawan Deshpande. A 4 of solace here, because some runs on the board, and now from here he and Jaswant Acharya will have to build up a big partnership. 202 is not easy to bring in, and it would be a really matured innings is required now for the Bengaluru team to get them cleared from this fix which they are right now. A shorter delivery by Kaushik, and again quite nicely timed, just pushed for a boundary here by Deshpande. So 2 fours to end the over. It is 8 for 2, the Bengaluru Blasters team.
Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active... Sharaf HS is a new bowler who's come to bowl the third over of this innings. Every bowler has been given one over a piece till now, and they are in trouble, Blasters, but they need to understand that if you carry the burden or you ponder over a point that you are in trouble, you'll always remain in one. But if you try to make out a way, or you try to get a solution over that, you'll always find a path that can lead to victory. If you play accordingly, according to the strategy that you have discussed in the team meeting before you entered to score those 202 runs, you will always have a secondary plan, because if we fail, you have to execute. You still have to score those runs, right? You can't say my openers are out, my main batter is out, we don't want to continue. That is not the spirit of the game. The spirit of the game says that you have to be in the groove all the time. Even if you lose 9 wickets, you have to play for that 1 wicket. Till the 1 wicket is down, you're not declared all out. So that is the reason why cricket is a very fantastic game, which demands you to do or perform a skill which you're not equipped at. And it also says that never give up. The never give up spirit of cricket is always very, very commendable. And this is what needs to be inculcated in the chase, and that will keep them driven all the time. Because 20 overs, now those 120 deliveries will be like a mountain to climb. But when you're mountain to climb, I remember those words which I studied in grade 3. He couldn't pull a mountain nor pull a big oak tree, but my father became a mighty big man with a simple philosophy. Do what you do well, boy. Do what you do well. Whatever you do it to the fullest. Don't leave it half-hearted, or don't approach the situation with a closed mind or a closed approach. That is not going to help you at all. And when you start thinking in that manner that you are going to lose this match, how am I going to score? You will never get an answer. You say to your mind and your heart that, okay, these are the runs I need to score, and this is the way I'm going to do it. 3 questions that are very, very golden. If not me, who? If not me, who is going to score those runs? If not now, when? If not now, when am I going to score those runs? And if not this way, then how? It is this way that I'm going to score runs. I am going to dictate the script, and I am going to be the lead character in the story that will write the scripture to this victory line when we end up chasing 202. Let's break up those 202 into 8 portions of 25 runs, and there you have a chance to achieve 25. We say it in school and colleges, the shorter the goals, the greater the momentum and the greater the motivation to get another goal. Set yourselves with smaller goals, achieve them, feel happy, and again you set up for a small goal that will help you achieve more. 3 overs done, 11 for 2 other Blasters. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड क्रिकॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे। आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम
देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स After those lessons of wise words by Swapnil, we are here with the fourth over, and I really hope that both the batters who are on the field, Pawan Deshpande and Jaswant Acharya, would have a time and just listen to what Swapnil has said, as this will be giving them a lot of motivation from here to build on this innings, as 202 runs are required. And at this point they need 190 to win off 101 balls, and at this point it is Kaushik who is bowling. He is bowling in quite a good pace, he's bowling in quite a good form, and the power play hasn't been going there for the Blasters team, which is at this point fine. Both the batters now would be thinking of keeping the wickets with them and going slow at this point. They will be targeting the overs after this, and that would be at this moment their plan, as shorter goals are required, but they would be also requiring to have that one or two odd boundaries in an over, as we saw which was done quite so well in the second over. They lost a wicket, but then after that there were two boundaries struck by the bats of Deshpande, and after that the third over just singles of it. So they would be needing to hit those boundaries, as this time Jaswant wanted to clear the straight path, wanted to clear the long on region, but the fielders at mid-on doing a very, very, very brilliant job to save that, save those 3 odd runs, or I would say 4 odd runs, as both the batters don't take a single, and it will be just 2 of it. 13 for 2 are the Blasters here, and Jaswant, yeah, you're saying something. Yeah, please continue. Yeah, no, please continue. No, you please. Pehle aap. Yes, so I was saying that the power play is now needed to be utilized to the best by these two batters, as Jaswant Acharya has been looking a bit slow, and Pawan Deshpande has the power and the capabilities of going for the big shots now. And yes, Swapnil, what were you? Yes, I was just trying to elaborate on your point that the power play needs to be brought into existence, because you cannot just go on hanging around a point where, I repeat myself, you say we are 14 for 2 and you are pressurized. You're 14 for 2, you're pressurized. The moment you say you're pressurized, you are. The moment you start accepting the pressure, you will be pressurized. The moment you say no, I'm going to take it the other way around, I'll score and I'll see how close can I get. And the process, if I get some big overs in the middle, I'll make sure that I just emphasize on my skill set and I express my intentions of getting it to the session where you pressurized upfrontly. But that is gone. The previous ball is done. This is a present scenario where you're playing the delivery, and from here on you need to just be positive and calm and composed. Also, with that calm and composed approach, you need to assess the situation. Which bowler is going to bowl which over? The moment you start assessing the condition, you will be in a state where you start thinking about victory and not survival. Wherever you go, it is the mentality first, and a miss by the batter to get rid of the last ball, and 4 overs done, 15 for 2 are the Blasters chasing 202.
हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे। आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Yes, and the start of the over of Sanath has been done quite so well for the batter, I would say, as it is Pawan Deshpande who clears the field, and he does not clear the boundary, he goes for a maximum as he starts off the over with a sixer. Can he build up this total as he is going for the big runs? But no, he just takes a single this time and gives the bat to Acharya, Jaswant Acharya. 10 balls he has played and 4 runs. He has to change his momentum now. He has to go for the bigger shots, the boundaries, and it wouldn't come directly to him. He has to build that up as he has to try. This time he tries well and he gets that shot as well. Flicked quite well by Jaswant towards the fine leg region for a boundary, and he and both Pawan Deshpande now are building up the runs. They are building up one by one ball at a time, and that has been working for them quite so well. 26 for 2 is the score. In this partnership, I feel that with the batting prowess these two batters have, they have the potential to get the chase, but with caution, with maturity, and with a lot of boundaries. Yeah, I was expecting courage, a lot of courage. Yes, I was just expecting this kind of turnaround where the batters need to understand it's not 20 overs, it is 6 balls that I'm facing now. 6 balls I'll be facing in the next over. 6 balls from there, 6 balls from there. So in the 6 deliveries in an over, how many can I get? I'll try to get the best, if not the best. It is going to be one of the match where you will have to rely on your concentration level, your perseverance, your patience. All that, when you mix together, it will give you one answer. That patience pays off. Your perseverance, your application of skill gives you the result. And when you get a result out of that consistent approach that you apply, it will be a very, very good evening, a very, very good outing for you and your team. Any team can win, but the team which applies all these qualities has a great chance of winning. Now it fell short of the fielder at the mid-on region in front of him just, and Sharath HS expected that to be taken by the captain. Nevertheless, 5 overs done, 31 for 2 are the Bengaluru Blasters. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे। आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे
और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पर छठे ओवर की। लास्ट ओवर है पावर प्ले की और प्रणव आए हैं करने को इस लास्ट ओवर में कुछ तकनीकी बदलाव। शायद कोई विकेट मिल जाए प्रणव भाटिया, जिन्होंने एक चौका लगाया था आखिरी गेंद पर पहली पारी में। यहाँ पर उनके पहली गेंद पर चौका लगाकर कह दिया है कि भैया हमने मामला रफा दफा कर दिया, आपके साथ हमारा अब जो है हिसाब बराबर हो गया है जशवंत। लेकिन आपको जशवंत और मैं चाहूंगा देशपांडे भी ये बात सुने कि आपको और ऐसे चौके बहुत सारे लगाने हैं, क्योंकि 166 बनाने हैं 88 गेंदों में। और शायद थोड़ा सा नहीं, काफी मुश्किल है ये सफर, लेकिन अगर तय करने की ठान ली तो ये तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि नामुमकिन में भी अगर आप ना हटा दो तो मुमकिन ही शब्द बचता है। और अकेले ही चल पड़े थे दौरे मंजिल, लोग आते गए, कारवा बनता गया। ये जो शब्द हैं वो हमेशा आपके जहन में होने चाहिए। और हो सकता है अगर आपने किया तो हो सकता है, अगर आपने सोचा तो आप सच में कर सकते हैं, अगर आपने नहीं सोचा तो वो कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर एक अच्छी पारी की एक जरूरत है। 12 गेंदों में 19 पर खेल रहे हैं देशपांडे और 16 गेंदों पर 18 पर खेल रहे थे जशवंत, और यहाँ पर 17 गेंदों में 24 पर खेल रहे हैं अभी जशवंत आचार्य। ये बिल्कुल सीधा एक छक्का लगा दिया है साइड स्क्रीन के भी ऊपर के छत पर, और ये बहुत ही अच्छी और बड़ी ओवर साबित होती हुई। प्रणव भाटिया लीजिए, आपने तो पहली पारी के आखिरी गेंद पर चौका मारा था, यहाँ पर आपके पहली ही ओवर के पहले गेंद पर छक्का मार दिया है और चौथी गेंद पर मार दिया है एक लंबा सा छक्का। तो 12 रन आपके पहले 4 गेंदों में आपने खर्च कर दिए हैं। 43 हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर, और ये बिल्कुल कट शॉट सीधा पॉइंट के हाथ में, कोई भी रन नहीं, 12 रन ही रहेंगे 5 गेंदों में। 5.5 ओवर ये आखिरी गेंद होगी पावर प्ले की। देखते हैं इसमें क्या जादू कर सकते हैं प्रणव भाटिया, या फिर इस पे भी अगर एक आध छक्का लग गया तो शायद और मुश्किलात हो सकती है आपके खेमे में। नहीं, लेकिन बिल्कुल सीधा खेल दिया है और लॉन्ग ऑन के फील्डर नहीं बचा पाएंगे ये चौका। 47 पर 2, पावर प्ले समाप्त। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। और यहाँ पर स्पिनर्स की जो स्पेल है उसे शुरुआत तो हो गई थी, पर यहाँ पे स्पिनर्स की स्पेल की जगह यहाँ पे स्लॉगिंग की स्पेल की शुरुआत मैं कह सकता हूँ। इसके पहले 5वां ओवर था, शुरुआत छक्के के साथ हुई, फिर सिंगल लिया पवन देशपांडे ने, फिर जसवंत आचार्य तो बैक टू बैक चौके मारे, एक डॉट बॉल खेली और एक सिंगल लेते हुए वापस स्ट्राइक रखा
उसके बाद छठी ओवर में शुरुआत की चौके के साथ, एक सिंगल लिया, फिर पवन देशपांडे ने फिर सिंगल लिया, फिर वहां से जसवंत आचार्य छक्का और फिर एक चौका। तो जसवंत आचार्य ने वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बड़े शॉट खेलने की, वो अभी अपने ऊपर ले ली है, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेंसिबिलिटी के साथ आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो बस छक्के चौके को खेलने जाए या फिर बड़े शॉट्स ही खेलने जाए तो आप उसका पछतावा भी होगा। आपने जैसे अगर हम कंपेयर ही करना चाहे तो मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पे जो पर वो एक लय में पहुंच गए थे, उन्हें हर गेंद बाउंड्री के बाहर मारने की कोशिश कर रही थी और टाइम नहीं कर पाए, 40 रन पे आउट हो गए वो। और इस मोमेंट पे ब्लास्टर्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं उन्हें, निहाल को एक अच्छा कैमियो कहने के लिए कहूंगा, पर यहाँ पे अगर जसवंत कुछ ऐसा करके आउट हो जाते हैं या देशपांडे कुछ ऐसा करके आउट हो जाते हैं तो मैं थोड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी कहूंगा, क्योंकि आपके ऊपर वो एक टास्क दिया गया है इस इनिंग्स को बिल्ड करने का। आप 2 विकेट पहले ही गवा चुके हैं और सिचुएशन काफी डिफरेंट है दोनों इनिंग्स में। तो यहाँ पे एक सेंसिबल नॉक की जरूरत विथ सम बाउंड्रीज, जैसा मैंने पहले ही कहा था, मैच्योरिटी और बाउंड्रीज दोनों की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि आपका लक्ष्य काफी बड़ा है, 202 का है आपका लक्ष्य, तो वो बड़े रन्स लगेंगे। पर यहाँ पे फील्ड में कुछ और ही होते हुए दिख रहा है। एक चीकी सिंगल लेने की कोशिश की थी, बॉल को प्लेस कर दिया गया था पॉइंट की दिशा में, शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में, शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ, और फिर फील्डर ने एक बढ़िया डायरेक्ट हिट मारी। और क्या वो डायरेक्ट हिट एक सक्सेसफुल रहेगी? जी हाँ, एक विकेट रनआउट के थ्रू देखने मिल रहा है हमें यहाँ पे, और ये होगा विकेट जसवंत आचार्य का। मैंने कहा था कि थोड़ी और मैच्योरिटी लगेगी, वो रन शायद नहीं था, पर उन्होंने लेने की कोशिश की और अपना विकेट गवा बैठे। 50 for 3 है ब्लास्टर्स के स्कोरबोर्ड पे, और यहाँ पे अंपायर दिखाएगी अपनी घड़ी की तरफ उंगली, और होगा ये एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, मेरा नाम है आयुष।
Last ball of the 7th over coming up here. 51 for 3 after the strategic timeout. There was a run out that caused the mishap here. Now, playing against the line in this situation would not be suggestible, Mr. Suraj. But nevertheless, he's got a connection of the bat towards the fine leg region for a single to end the over. 7 overs done. 52 for 3 are the Bengaluru Blasters. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Don't be a mere spectator. Become an active participant. Yes, and Shreyas Gopal now bowling his second over. He came in the first over of this game, and after that, he has arrived now. He would be wanting to get a breakthrough. Yes, the breakthrough has arrived from runouts here, but on the other hand, it has been some good batting, some sensible batting there by Pawan Deshpande, and that needs to be broken here, and couple of wickets here or a single wicket here would be a big blow for the Blasters, and I would say a small victory in a bigger one here for the Lions, as Shivamonga Lions would be needing to stop and curb the Blasters team as soon as possible. Because mind you, we are starting this tournament right there now, and a big win from here would be a great thing. While we're talking about that, audience member, quite fun and great dancing that has made us chuckle quite so well, which is a great thing. And yes, that continues. It's the Independence Day, guys. Everyone has come out of their house and enjoying this beautiful evening. And if you are listeners from India and around India, we also wish you a very happy Independence Day. Yes, and 57 for 3. They need independent from this shackles that has been around them for a while now. Shreyas Gopal, what a bowler he is now. 1.5 overs, none for 5. And he bowled a maiden to start this innings. And in that, they got a run out as well. So this is a kind of legacy that a captain should carry. And now he gets rid of the over pretty fast. 8 overs done, 57 for 3 are the Blasters chasing 202. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app
full toss to start the ninth over from Deepak. And it is not a good start from Deepak Devadiga. He is the impact player for the Shivamogga Lions, as Rohit Kumar is the substitute that has gone out, and it is the spinner Deepak who's come in, Deepak Devadiga, and he's bowling some good deliveries. The first delivery going for a boundary. Now he's come up with a spinning delivery away from the left-hander, just that caramish delivery that he's bowled now, and 5 runs for the first 2 deliveries means it is just building more pressure at the more pressure at the Blasters, because 202 is now looking a little difficult in a grey area where at least you are in a position where you would have got to a good start, but with that run out, it just left Deshpande out of partners. Now Suraj has come there, Suraj Ahuja, along with Pranav Deshpande, and how far they can take this innings is a good, because what happens, with the pressure, it gets to your physical ability to score those runs, those couples and triples also. Now they get a 3. They get a 3, one of the ricochet of the stumps when the ball was hit directly, but nevertheless, it is an overthrow that costed them the 3rd run. 137 to get in 68 deliveries. It is a difficult task, not an impossible one for the time being. If they get, say, good 3 or 4 overs producing them 20-25 runs, and if they go for the kill now with proper shots and proper approach, the good attitude, the positive and blastering attitude, it can get you those runs. But how far you take this momentum, because you have not got any for the time being, as the cut shot towards the deep point region gets them a couple of runs. So a good over for the time being. It has given them 4, 1, 5, 3, 8 and 2, 10 runs here, as Deepak Devadiga bowled his first over for 5 runs, and now he's given out 10 runs in the 5 balls of his second over itself. Blasters are 67 for 3 in 8.5. Deshpande on 31 of 20. Suraj on 6 of 7. So, it's kind of a situation where you need runs, you need wickets to stay as well. So 9 overs done, 67 for 3 are the Bengaluru Blasters. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify. Is the captain now arriving to bowl his 3rd over? Shreyas Gopal, who has just given in 5 runs in his 2 overs. He is looking in a great stride, a great bowling spell. Yes, there aren't wickets reflecting on his personal scores, but he would be wanting to add up that. But on the other end, it is Suraj who wanted to clear the boundary, and I think I am sort of a Nostradamus today. I just said that it is Shreyas Gopal who needs to take a wicket, and he does that quite so well. And it is Suraj Ahuja who just tried to went on his knees, wanted to sweep that ball, clearing the mid-wicket region, but the fielder there making no mistakes whatsoever. And this is the fourth loss for the Bengaluru Blasters, and the situation getting bad
to batter, and I would say a bit terrible as well. She missed out on the grammar. Yes. Bad to worse and bad to badder. It's because of the situation. Yes, it's a fun element that we tried to induce in that. But Shreyas Gopal leading from the front. First, he bowled a dot delivery. Then he asked the batter to go over the boundary rope. And it was Suraj who could not just connect. And he's out. Suraj Ahuja on 6 of 9 deliveries. A good catch taken in the deep by S. Sivaraj. And Gopal getting his first wicket in this match. He's given out only 5 runs into the third over of his spell. Shubham Hegde getting a chance to play. And he's played a couple of matches. This is the second one. 11 runs to his name. But he needs to serve his team with a better outing today. More than that 11 runs. Very, very more than the 11 runs that he's got till now. And on the other hand, it is Pawan Deshpande, is it? Yes, Pawan Deshpande, who is batting on 31 of 21 now. And he needs to stay composed, calm, and what do I say? In sarcasm, if I say he'll wait for another partner to come and join him in the run chase. So Shreyas Gopal is just telling, listen to me, I'm the captain. I have placed him there. Just don't move the fielders when I'm placing them. So every now and then the keeper just intervening in what Shreyas Gopal is trying to do. And so when he's placing those fielders in right position, let it be, he says, I'm the captain. I know how to set my field of my own bowling. You don't need to tell me what I need to do on every ball. So because it was the keeper who was making few changes when they were into the first 4 or 5 overs. Now it is Shubham who is facing Shreyas Gopal, bowling the away going deliveries from the left hander. A good structure that has been fallen in part for the Shivamoga Lions. Blasters at 70 for 4 in 9.5 means that they are very, very behind and they will require almost 132. Well, that's a close one. That's a close one. Very, very close. It hit him on, I think it hit him above the knee roll. That is the reason only for the umpire to say no. 10 overs done. 70 for 4. 10 overs remain. 132 to get. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as... And a single to over deep mid wicket to start the over. And it is Utkarsh, who is a new bowler which has arrived. Utkarsh Hegde. And now Blasters in a fix here, in a very deep fix. And this is Deshpande, who wanted to get out of that fix, but he has just dig up a bigger, I would say, a hole for his team. He was the only one batter who was looking in some stride, who was looking in some good, he was batting quite well, but this time he went towards the mid-wicket region. I would say a shorter delivery by Hegde, and a fielder making no mistake. It was Shivraj once again getting that catch, taking that catch. 2 catches for him, so brilliant job in the fielding. And Pawan Deshpande, 32 of 24. Situation getting worst to terrible here. I
get my grammar back. And 71 for 5 is the score for the Blasters here. What will be the... I would say this is a disaster management needed now for the team, as the batter in Deshpande just not happy, agitated, throwing his bat away. And this is something which as a batter you should not do. Respect your equipments, and that is really, really important for you. Yes, you have lost your wicket, you were looking in a good form, but that doesn't mean that you throw out your bat. Nevertheless, new batter arriving with Shubhang Hegde is coming on the field, and it is an impact player. The umpire showing the marks of an impact player here, and Adikosh bowling to him. We'll have to wait, as the visuals haven't shown who has arrived, and yes, it is Ashish who has arrived to play the position after the fifth man is down. And Adikosh bowling quite so well. 2 runs given, and one very, very, very important wicket here. This time a bit fuller, gave a flight to this delivery and flicked away for a single here. Shubhang and Ashish would be needing to build up this very out of the ordinary partnership here, as this is really important to get a few runs now. Yes, the match is nearly out of your hand. Ashish Mahesh has been the impact player for the Blasters team, and now it is important for them at least to get as close as possible to that total, because you are in the starter end of this tournament, and these matches do affect your net run rate moving on. And the Blasters team knows that the match is I think it is the curtains halfway down here for them, but still they would be wanting to get as much as possible out of this game. As last ball of Hegde has been hit by Shubhang. Will it clear the boundary? Yes, it does. And it is Hegde versus Hegde, and Shubhang Hegde hits a very brilliant 6 to end the over. It is 80 for 5, the Blasters team. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an 54 deliveries remain, 122 runs to get. Tough task, almost approaching the impossible mark, and it will be even tougher when you have bowlers like Shreyas Gopal bowling at you with consistent discipline, and very, very authorized is the bowling approach by the bowlers from the Shivamogga Lions team, because they've not allowed the Bengaluru Blasters to get away with the game ever since the first wicket of Mayank Agarwal that they got. And Mayank, he would be very, very unhappy that he was not able to face even a single delivery, because he got a run out of a call towards the danger end, and he ran with complete agreement of his partner. But nevertheless, that is how cricket goes. And here it is, Blasters reeling at 82 for 5 in 11.2. They require to be more hostile with the run chase, but now it's not going to affect much to an extent, because the runs required are way too much. And it's not that we are saying that it's not possible, but it is going to be a very, very difficult task to get there. And with 5 wickets down, you would not even think of going for the kill, because you know that if at all they lose wickets, there's nobody to just make sure you just play even the 20 overs allotted to you. This is a 12th over going on,
and only couple of runs have come in this over, the last over of Shreyas Gopal, and even now he bowls it outside the leg stump, and there is a protection in the deep backward square leg which allows them only for a single. So 3 runs of the first 5 deliveries, and 83 for 5 are the Blasters, requiring 119 of 49, getting more and more difficult. But somebody, if they try to go big every over, those runs can be made, because we see sometimes you see innings of say 40 balls 100, 50 balls 100. So that is the case here, where they require 12 overs done, 83 for 5. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches, from international showdowns to heart-stopping. It is Adkosh Hegde who comes into bowl his second over, and he is looking quite so well. But this time a misfield towards the backward points region, it would give in a single extra run. But nevertheless, it is 84 for 5 now, Blasters, and they really require a big knock between these two batters and a big partnership from here, as Ashish Mahesh is the impact player, and we'll have to see how much impact can he bring. A very young lad, just 19 years of age, and it's a talent which has been picked up by the Bengaluru Blasters. How much can he help them? How much can he help this team to get back to course, as they have just detoured, and detour is an understatement, I would say. 86 for 5, and runs aren't there, wickets aren't there. What can help them to get out of the situation? It would be boundaries and sixes. As this time, Shubhang again, Hegde versus Hegde, and this time Shubhang just clears the first tier of the stadium and makes the ball reach to the second tier, and it is the audience out there enjoying quite so well. They really want to have the ball, and that has made the audience people to not give away the ball. They really want to touch the ball, and it is a weird kind of an interruption there. Nevertheless, they throw in the ball in the grounds, and we really hope that they haven't put up a lot of damage to it. It is just a catch, and that's that. And yes, a very good six there by Shubhang. He is capable of those big shots. He'll be wanting to go in a better flow. He would be needing more of these sixes, and more frequency of them will be needing to increase, as Adkosh Hegde bowling to Shubhang Hegde, and this time he goes straighter. Will he clear the boundary once again? He does not. A good fielding. I mean, I'm sorry, I just missed out of that visual, and it is some brilliant fielding between the long on and the long off fielder to stop that boundary, and it would be a couple of runs saved by them. Shubhang Hegde is the one batter who is not stopping whatsoever. He's batting with quite a great strive and precision and great power, I would say. And if we talk about that boundary saved, it is a very good footballing save, I would say, by the long on fielder, and the umpires are just making sure that it is not boundary of sorts. And from here it would be just a matter of huge task here for Shubhang and Ashish Mahesh, that these guys go for those big runs no matter what else they can do. After this, they don't have a big
tail-ending lineup here, and whatever has to be done is to be done by these two. So they should go. They should take that risk, that odd risk here. If from here they can build up the momentum and get the match, it would be a big thing. As we move to the last ball of the over, and it would be just a single to end it. It is 95 for 5 after the 13th over. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Imagine, just got to imagine where the worm is going, not even near to the previous worm. Talking about the worm that was built by the batting efforts of the Shivamogga Lions, as they were asked to bat first, and there is that situation arise here. But not only they require 105 and 40, but they require to tell themselves that, you know what, we made a wrong decision at the toss. One more nail in the coffin. 6th wicket going down on 97. Shubhang Hegde has to depart on 22 of 12 after playing a good innings. And Deepak Devadiga, the impact player, getting his first wicket in this match by just making sure that Shubhang Hegde does not make much of the opportunity that he's got. So it would be another day which is bad at the office for the Bengaluru Blasters. Nevertheless, they tried their best but only could reach 97 for 6 in 13.3, and the first priority now would be playing those remaining 6.3 overs. Otherwise, an all-out would be on the cards always. Somewhere down the line you feel for them, but it's cricket, and if you start feeling for everyone, there's not going to be any winner or any loser. But nevertheless, Ashish, who is the impact player for the Blasters team, now he has to get along with new partners, and Lochan Appanna was expected to be pretty late, but he's come nevertheless to rescue his team from the situation which demands 105 runs more. They've not even crossed 100, and they've lost 6 wickets in 13.3. Yes, and the bowling has been just so brilliant by the Shivamogga Lions. Most of them have been on the wicket scorecard, and it has just been so brilliant, except Sarnath and Pranav Bhatia, who has just bowled a single over. Everyone has been striving to take in wickets, and now 4 more wickets for the Lions to get a big victory, and they would be trying for that, as it is the captain Shreyas Gopal who has made the field quite so aggressive. There is a slip in the 13th over here, so that has been seen now. And Deepak Devadiga now bowling his last ball of this over, and it is just pushed away for a single run to end the over. It is 98 for 6, the Kalyani Bengaluru Blasters. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by.
Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our 15वीं ओवर यहाँ पर शुरू है और क्या सोच रहे थे, क्या हो गया है। ब्लास्टर्स 98 पर 6, 14.1 ओवर में, और प्रणव भाटिया यहाँ पर आए हैं अपनी गेंद से एक और शायद विकेट निकालने, क्योंकि विकेट्स तो सिर्फ 4 ही बची हैं आपको लेने के लिए। और अगर आप चाहेंगे कि आपकी टीम जल्द से जल्द जीते तो आपने कुछ करिश्मा दिखाना होगा गेंद के साथ और सोचना होगा कि क्या हो सकता है मेरी गेंद से, क्या मैं एक और विकेट ले सकता हूं। तो बिल्कुल हाँ, 16 रन आपने खर्च किए हैं, 1.2 ओवर आपने जो किए हैं यहाँ पर, उसमें अगर आपको कुछ प्राप्ति हुई तो बिल्कुल आपके कप्तान आपके खुश होंगे आपकी इस कार्य से, और आपके लिए शायद कुछ शाबाशी दे दे। यहां पर खेला गया है वाइडिश लॉन्ग ऑन की रीजन में, बिल्कुल नहीं गया वहां पर, और फील्डर तैनात तो थे लेकिन बहुत ही पहले ये टप्पा खा चुकी गेंद। 100 पूरे हो गए, कैसे वैसे करके 100 का आंकड़ा इन्होंने अब पूरा कर लिया है। क्यों नहीं चाहेंगे कुछ और रन बने, बिल्कुल चाहेंगे, लेकिन अगर ये कि हम आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, आपने 20 ओवर खेलने हैं, इतना याद रखिए। अगर आप 20 ओवर भी खेलते हैं तो आपके पास एक कुछ ना कुछ तो एक ढंग का सम्मानजनक स्कोर होगा, और अगर आप उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढते हैं, सकारात्मक ढूंढते हैं, तो अच्छी बात होगी आपके लिए ही। एक टीम क्या चाहती है, एक अच्छा स्कोर, एक टीम क्या चाहती है, एक ऑल आउट ना हो, और एक टीम ये भी चाहती है कि आप जैसे आपकी अच्छाइयों का यहाँ पर प्रदर्शन करें और आपके संघ को प्राप्ति हो कुछ रनों की। 15 ओवर हो गए, 102 पर 6 ब्लास्टर्स, और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की घोषणा।
और ये एक बेहतरीन शुरुआत मैं कहूँगा यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर की। आशीष महेश जो आए हैं इम्पैक्ट प्लेयर करने के लिए, शायद थोड़ी जल्दी ये शॉट्स मारने की कोशिश करते तो शायद एक बेहतर चीज होती, पर खैर देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पे डाउन द नी गए और एक बेहतरीन छक्का मारा है उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ। और यहाँ पे दीपक देवादिगा नाखुश रहेंगे। उनके लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहेगी कि जितना जल्दी मैं ये 4 विकेट लेने की कोशिश, या फिर मैं 4 विकेट में मेरा जितना कंट्रीब्यूशन कर सकता उतना करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ये एक माइंडसेट होगा दीपक देवादिगा का, क्योंकि आप अगर देखें ये टूर्नामेंट भी एक टेबल टूर्नामेंट है जहाँ पे रन रेट एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज निकल के आएगी। आप अगर शुरुआत से ही वो मोमेंटम और वो बड़े रन रेट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो आप टेबल पे भी अच्छे खासे रहेंगे। पर यहाँ पे आशीष कोशिश कर रहे थे यहाँ पे एक छक्का मारने का, और जरूर मिलेगा। जो लॉन्ग ऑन के फील्डर थे उन्होंने बॉल को लपका, बैलेंस खो बैठे अपना, बाउंड्री की तरफ गए वो, और फिर कोशिश की उन्होंने ये छक्के को बचाने की, पर खैर आखिर में वो बचा तो नहीं पाए, उसे एक 6 का ही। लेकिन इस कोशिश के पूरे 200 अंक मैं दूंगा उनको। देखिए उसके बाद भी जहां पर वो थे उधर से भी उन्होंने वापस अंदर डालने की कोशिश की बॉल को, लेकिन ये इतना कमिटमेंट अच्छा होता है। ये मिस टाइम शॉट है, ऊपरी हिस्सा लगा है बल्ले का, सीधा गया है ऊपर और कैच ड्रॉप कर लिया है यहाँ पर फील्डर ने। होना चाहिए था कैच यहाँ पर फिर भी, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाया। और जहां तक मैं सोचता हूं ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको 4 ही विकेट चाहिए थे जीतने के लिए, उसमें एक और कम हो जाता। बहुत देर तक ये हवा में थी गेंद, एक बहुत ही अच्छी डाइव भी वहां पर लगाई फील्डर ने, लेकिन आपने नहीं पकड़ा कैच, तो उतना ही याद रखा जाएगा। फिर एक बार उठा के मार दिया है काउ कॉर्नर की, जिनके ऊपर से 6 रनों के लिए एक और 6 रन। यहां पर ये बहुत ही बड़ा ओवर साबित होता हुआ 6-6-1 और फिर एक बार 6, तो 19 रन पहले 4 गेंदों में यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर लोचन की। हाँ बिल्कुल, ये तो होना ही था, क्योंकि आप जब इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करने की चाह में निकले हैं तो कहीं ना कहीं जाकर आप वो रन बना भी लेते अगर थोड़ी पहली शुरुआत की होती। लेकिन अब थोड़ी सी मुश्किलात हैं उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए। कुछ भी मुमकिन होता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ऐसा कहते हैं क्रिकेट में। लेकिन कभी कभी आप वास्तुस्थिति पर अगर जोर दें तो ये लगता है कि नहीं, कुछ चीजें हैं जो नहीं बन सकती। जैसे आप एक ओवर में बिना किसी अतिरिक्त रनों के 37 रन नहीं बना सकते, तो इसी प्रकार यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात हैं, क्योंकि 6 विकेट भी गए हैं, 115 रन ही बने हैं, 4.3 ओवर बचे हैं और आपको यहाँ पर जरूरत है 81 रनों की 26 गेंदों में। तो थोड़ा सा मुश्किल तो है, नामुमकिन मैं अब तक भी नहीं कहूंगा, जो कि लग रहा है। आगे जाके माने की कोशिश, बहुत ही अच्छा कनेक्शन, और ये 6 नंबर 4, 6-6-1-6-6 क्या हो रहा है यहां पर? थोड़ी सी बदली हुई पारी खेलने आए हैं, अलग ही लीग में लग रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे तो उन्होंने मतलब परिभाषा ही बदल दी है मैच की। अभी हम सोच रहे थे कि विकेट के लिए बॉलर्स टारगेट करेंगे, यहाँ पे लोचन अपन्ना और आशीष महेश बॉलर्स को टारगेट कर रहे हैं। 4 छक्के आ चुके हैं इस ओवर में, 25 रन की ये ओवर पहले ही हो चुकी है, और बॉल क्योंकि जा चुका है तीसरे टियर में, कोई है नहीं वहां पे तीसरे टियर में, इसलिए नई बॉल की मांग अंपायर की जाएगी। और क्या ये यहाँ से ऐसे और एक ओवर की जरूरत होगी यहाँ पे। बस ये एक ओवर को 24 रनों पे पहुंचा के ये मैच नहीं जीता जाएगा लोचन और आशीष के द्वारा। उन्हें ऐसे 2 से 3 और ओवर लगेंगे मैच के थोड़ा और नजदीक आने के लिए भी, पर एक अच्छी शुरुआत में कहूंगा उसके लिए। और क्या ये गेम का रुख बदल सकते हैं इस बार? आखिरी डिलीवरी डाली दीपक ने, कट करने की कोशिश थी बाउंड्री की तरफ और 2 रन लेने की कोशिश, काफी सफल हो गए उसमें। कपल के साथ की ओवर की समाप्ति 129
फॉर 6 है बेंगलुरु ब्लास्टर्स की टीम। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? क्या इनसाइड आउट मारने की कोशिश थी, मारा भी, लेकिन जहां तक गेंद पहुंची वहां से रन नहीं आए, विकेट जरूर गवाया है। 7वां विकेट, एक और रन आउट। सो कौशिक यहां पर करने आए हैं अपनी तीसरी ओवर और उसकी एक गेंद पर बहुत ही अच्छा एक पैर पर गए, नीचे बैठे और कनेक्ट किया। डीप एक्स्ट्रा कवर में ये शॉट खेला गया। रनों की दरकार आपसे क्या क्या करवाती है। यहां पर लोचन अपन्ना बहुत ही अच्छा 17 रनों का एक खेल करके पवेलियन में लौट गए हैं और इससे बहुत ज्यादा मुश्किलात अब पैदा हुई है, क्योंकि यहां पर आपको चाहिए ऐसे रन जो आपको जीत के पास ले जाएं, लेकिन ऐसे रन आपको नहीं मिल रहे हैं, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है यहां पर। और क्योंकि आपने एक अच्छी शुरुआत नहीं की थी, यहां पर आपका स्कोर जो है 17वीं ओवर में वो भी 130, 7 विकेट के नुकसान पर ही पहुंच गया है। ऋषि बोपन्ना नए बल्लेबाज। जी हाँ, ऋषि बोपन्ना नए बल्लेबाज है। यहाँ पे हम सोच रहे थे कि यहाँ पे मैजिक मूवमेंट्स हो सकते हैं क्या ये आशीष महेश और लोचन अपन्ना के द्वारा, क्योंकि वो जो ओवर थी उन्होंने इसके पहले खेली थी वो कुछ अलग ही थी। 6 से हुई शुरुआत, फिर और एक 6, 12, फिर एक सिंगल 13, फिर 2, 6, 25 रन बन गए थे और 25 के बाद 2 रन निकाले थे। पर यहाँ पे क्या बोपन्ना वो कंटिन्यू करेंगे? और जी हाँ, पहली ही गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने की कोशिश और वो 4 रन निकालेंगे उससे। ब्लास्टर्स की मुझे लग रहा है स्टार्टिंग हाफ टेल एंड कर रही है यहाँ पे, क्योंकि जो गेंदबाज है उनके वो बड़े रनों के लिए पहले ही इंस्टेंस से जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी पारी यहाँ पर 1-2 लोग खेलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ही दूर जा चुकी है गेम उनके हाथ से। और जैसे ही हम सोचते हैं कि थोड़ी सी पास आ गई है, वहां पे आप विकेट गवा देते हैं। 68 रन चाहिए 22 गेंदों में, हो सकता है, ना नहीं कह रहा हूं अभी भी, लेकिन बहुत ही बड़े शॉट्स लगाने होंगे। अभी भी आपके पास गेंदें बची हैं 22, और अगर आपके इरादे नेक हैं तो आप उसकी ओर जा सकते हैं। बहुत ही सीधा मार दिया है, बॉलर के हाथ को लग के गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन जरूर मिलेगा और उसी 1 रन के साथ संतुष्ट होना होगा आपको, क्योंकि आप हमेशा सोचते हैं कि जोर से मारना चाहिए, लेकिन उस जोर से मारते मारते जब भी आपका संयम खो देते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ये बिल्कुल भी एक बुरा शॉट नहीं था खेलने के लिए, लेकिन बॉल जोर से लगी होगी बॉलर को, क्योंकि इतनी जोर से मारी ही गई थी। बहुत ही बढ़िया यहां पर खेल का प्रदर्शन इन निचले क्रम के खिलाड़ियों से देखने मिल रहा है, और अच्छा भी लग रहा है कि आप वहां पर
एक अच्छी पारी खेल रहे हैं और क्योंकि आपने एक ज्यादा विकेट गंवाए हैं तो आप खुद को बैक नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ी सी एक सोचने वाली बात होगी कि रन बन सकते हैं। ये अगर किसी ने उनको जाके समझाया, एक मैसेज तो जरूर आया होगा, क्योंकि बॉल हाथ को लगी है गेंदबाज के, थोड़ी सी रुकावट आ गई है खेल में। ये अगर किसी ने उनको बताया कि ये रन हो सकते हैं तो शायद वो उतना प्रयास करे और उस प्रयास में शायद सफल भी हो जाए। आप नहीं जानते क्रिकेट में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट ये अद्भुत खेल है, आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखा सकता है और आपको आपके लक्ष्य से दूर भी रख सकता है। देखते हैं क्या होना है। फिलहाल तो उनको चोट आई है तो शायद डॉक्टरी उपाय वहां पर चल रहा है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर एक बार मिलेंगे। Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned. Stay curious. And yes, the injury has been treated और हमें लग रहा है कि बॉलर जरा बेहतर महसूस करेंगे इस बार। वापस एक डायरेक्ट थ्रो की चांस थी और उन्होंने अपना हाथ गेंद के ट्रेजेक्टरी के बीच में डाला और थोड़े से नाखुश तो दिख रहे हैं। खैर ये तो हमें आफ्टर गेम ही वो बता पाया, क्योंकि अभी भी उनके हाथों में बैंडेजेस जरूर है, पर वो अपनी ओवर को खत्म करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। तो गेंदें बाकी है, एक चौका आ चुका है और भोपन्ना ने अच्छी शुरुआत तो दी है। वो बड़े शॉट्स मारने की तरफ जा रहे हैं इस बार कीपर निहाल एक अपील की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बॉल एक फुलर डिलीवरी थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप और बैट के एकदम नजदीक से गई है ये गेंद। तो अंपायर ने तो साफ साफ मना कर दिया। बॉलर ने भी इतने सवाल नहीं पूछे यहाँ पे अंपायर से, पर निहाल ने शायद कुछ सुना होगा, शायद वो बैट का थंप सुना होगा। नेवरदलेस आखिरी गेंद की तरफ हम रुख लेते हुए यहाँ पे बड़ा शॉट वापस खेलने की कोशिश बोपन्ना का, इस बार बॉलर के सर के ऊपर से मारा और ये बाउंड्री के साथ करेंगे। ओवर की समाप्ति 140 पर 7 पहुंच गई है बेंगलुरु ब्लास्टर्स और ये हुई 17वें ओवर की समाप्ति। Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong.
Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickon accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability. Start of the 18th over, 141 for 17.1 overs done. It is just a situation where you are finding yourself on the verge of going for runs and scoring and winning it for your team, but you see at the overs remaining and you say no, it is just too far, not possible for us to win this match from here on. Somewhere down the line you think that it's going to be very, very difficult. Now it was in the air, mistimed, but this time it was away from the fielder, and now it's one more run out. 8th wicket going down in the form of run out. Never expected that, but always on the cards. So that is the 4th run out in this innings, as told by my partner in crime, Shaurya. He is keeping a wild watch on the statistics today, and he is very, very alert and very, very agile with all that is happening on the field, because there are actually few happenings which are not in the context of the game. The run out was never on the cards, but it is happening there. And when you have a run out on the cards, as many as 4 run outs on the card, you have only yourself to blame, because Rishi Bopanna, now he is playing good for those 2 boundaries that he hit, 10 runs that he got of 5 deliveries rather, and he's out back to the dugout, helping the team which is bowling to wrap up things very, very comfortably and very, very fast. Yes, and talking about run-outs, it was first Mayank Agarwal who got run out by Kadam and Ulal. Then it was Jaswant Acharya who got run out by Kranti Kumar, a very good direct hit by him. And it was Lochan Appanna after that who got run out by Shivraj. And then Kranti Kumar again, this time with getting the wicket of Rishi Bopanna. I mean, if you look at the fielding here, especially while going back for a throw, there has been so many chances where the wicket has been directly hit, even if the batter is inside, and just brilliant here. The collection by the keeper Nihal Ulal and throws by the fielders has been brilliant here, and a lot of people in a lot of times don't take run outs so seriously, but if you look at it, the wicket of Captain Mayank Agarwal was with a run out. Jaswant Acharya was looking quite so well, also run out. Lochan Appanna with those blastering 2 sixes, and then Rishi Bopanna with 2 fours after that. So it has been the run out which has been the disruptor of the Bengaluru Blasters, and there has been change in the ball, as the ball was changed quite so early, but I don't think the umpires were happy, and they call again for a delivery for a new ball here. And yes, and it is a situation where you want to just go out of the park. The bowler ran towards the ball as it was hit towards the short covers region, and he got rid of the ball pretty well and threw it back to the keeper for a run out, and then it was a run out on the cards. It just happened to be a game where you forget all the negatives and you have no positives in your kitty for the time being. The Blasters are struggling right from the first wicket of Mayank Agarwal that felt in the first over. Mayank Agarwal departing even before he faced the ball. So that was a disastrous start for them, and from there on it was just a matter of time where they would be expecting the game to get over early. And will it be a no ball as a full toss over the waistline? But was he ahead of the popping crease? Yes, I think so. He was ahead, and that was the thing by the umpire as well. So nevertheless, it is. Yes, and now 2 more wickets remaining. There was a time in the 6th wicket where we thought that the partnership can build this time. It is Kumar who wanted to clear the fence. Just nearly missed. A good job there by the fielder at the long off region, saving 2 runs for his team, as it is a couple taken by both the batters in Ashish and Kumar. It is the end of the 18th over. It is 146 for each. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickon app.
Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive line. 18 overs done, 146 for 8, and with the start of the 19th over, they get a single towards the deep. On the onside, there are fielders that are onside. It is that area where the batters try to slog those runs, and LR Kumar is the new batter who's come to join Ashish Mahesh, who is this impact sub. And what this has done is it has created a discrepancy in the minds of the batters as well as the team of the Blasters, that aren't we so good in chasing, because they had put a setup of a target in the previous encounter where they lost the match defending, and now they had lost the match chasing. So how does a team think from here on? How does likes of Mayank Agarwal get into the shoes of the captain once again, and how does he talk to his team, and how does he just face the matches to come from here on? It is a start of the tournament. It is not into the business end. But the way you lose matches, the way you win matches, impact on the net run rate is quite considerable. Yes, a net run rate would be a really, really important thing. At this point, the Lions would be so happy with what they have performed with the field, with the ball, with the bat. Everything was just stupendous by their end, and now it is a responsibility for the, I would say, the impact player Ashish to get some odd runs and end the game with 20 overs done on their end, as 2 more wickets are remaining, and Sarnath is bowling his 3rd over. It is the bowler who is bowling is Sharanthesis. Sorry for apologies for the name. And Sharanthesis would be wanting to get those wickets. I'm talking about the points table right now. Shivamonga are on the 2nd position. Yes, it is too early to talk about the points table, as anything could change at this certain point. But this victory would be giving them some very good, I would say, mental stability and very good psychological strength, as this time Kumar hooks the ball towards the deep 3rd region for a 4-year. Good shot played by LR Kumar, just analyzing the situation and just getting an idea of where the ball was there in the arc to be played for an uppercut towards the deep 3rd region. A boundary, nevertheless, too late for these runs to come your way, but nevertheless, those runs you get on the scoreboard will help your net run rate in a bit. So now it was hit towards the long off region where the ball fell well inside the boundary line, and so it was only the runs that they took by running. Couple of runs. So in this over, they got 3 singles, 1 of the leg by, a couple of singles, a couple and a 4. So 6 and 3, 9 runs in this over so far. And this is the 19th over, just waiting for the 20th over to get rid of this innings. And, they have discussions to be made. Here it is, tried to pull that ball over the square leg region. And it is the end of the 19th over, 155 for 8 are the Bangalore Blasters as they're chasing 200. And prepare yourself to be in with activating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app.
Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickon app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickon app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant. Right. Start of the last over of this innings. The chase did not go as per the Blasters, but they have just managed to save their 2 wickets towards the last. 5 balls are remaining. Kranti is the bowler who's bowling his second over of the spell. And is it a catch? They are appealing for one, and they are now taking suggestions amongst themselves. They are discussing. Blasters, the last thing that they wanted is one more wicket or an all out. So here it is. The keeper does a good job. Nihal behind the stumps, and he thinks it is out the inside edge, carrying to the keeper, but was it a bump ball or was it a straight catch? You have to see, just whether it hit the bat or it did not. So they are going for a third umpire review, the umpires, but they were not sure about what the thing was all about. A fair delivery. Now it is checked by the umpire on the TV. Third umpire coming into play every now and then for runouts in the first innings, in the second innings, sorry, and now for a catch. Oh, it might be a bump ball because the ball hit the ground after it hit the inside edge of the bat, the bottom edge rather, to be fair enough. And they're just laughing because they know even if they get a wicket, it doesn't matter. Even if they don't get a wicket, it doesn't matter. But making a team all out is an achievement for all the bowlers and the bowling team. So they will actually try for that wicket. Everything they've got, they're appealing, and it is the second ball of the 19th over on which there was an inside edge as per the keeper. The umpire is checking for one, and the decision is not given yet. Yeah, I think it is troubling. No, it's NOT-OUT. So not out for the batter, but a good piece of wicket keeping behind the stumps. It is actually commendable because the keeper is almost blinded before the ball comes, and then diving and taking a catch, low dipping catch, and that too with the concentration on the bat, whether it is hit the bat or no. It takes some skill, man. And now he wanted to play towards the covers region, but gets it towards the long on region for a single, and it is L.R. Kumar giving the strike back to Ashish Mahesh, who is batting on 29 of 22. He's played his part, but I mean, you cannot blame anyone in this. Whom will you bowl? The bowlers who did not bowl well in the first innings, giving out 201 runs, or the batters who failed miserably in chasing those 202 and getting only 157 or 58 on the board? This is not time to play the blame game if they are going to play that game. But it is time to just sit along your team and introspect and take into consideration what all could have been done on a brighter side that have landed them in the troubled situation. So this is where you analyze yourself, your team's performance, and the last couple of deliveries remain in this match. The chase is just out and over, and the game is dusted as well. It is just a formality to bowl those 2 deliveries which need to be because you have not got an all out, and now the chance of all out also dusted here with that single towards the long on region by Ashish Mahesh, and getting L.R. Kumar to face the last ball of this innings, the last ball of this match, probably, if it doesn't bowl a no or a wide ball. 159 for 8 in 19.5. What will be the last ball be? Will it be 165? Will it be 163? Or will it be 159 for 9? No, it is in the air towards the deep point region for a boundary to end the innings. 163 for 8 is what they managed in their 20 overs, chasing 202 runs. Is it a 6? Yes, it is given a 6. What a shot that is. 165 for 8. Towards the end, they got some runs, but that was not enough. Bhuvan Raju and Mayank Agarwal started the innings, and both of them departed for a 0.
and that was a situation where they could not make it out of. Jaswant Acharya, 29 of 21 with the help of 4 boundaries and 1 6. Pawan Deshpande, 32 runs of 24 deliveries. There was this partnership which was there for a while, but they couldn't emphasize on that. 50 runs partnership was there between those two. Then Suraj Ahuja departed for 6. Shubham Hegde tied a hand for 22 of 13. Ashish Mahesh, 30 of 24. And Lochan Apanna, 17 of 10. They gave a kind of a start to their innings, but were never close in getting their team towards the 202 run mark, which was required to win the match. Lochan Apanna with 17 and Rishi Bopanna with 10 of 5 and Kumar LR with 16 of 9 remaining not out with the help of 3 extras, 1 bye and 2 wides. They got 165 of their 20 overs with the loss of 8 wickets. In the bowling, yes, in the bowling it was started by Shreyas Gopal. Quite a good, I would say, spell by the captain. 1 maiden, 11 runs given in his 4 over spell and a wicket for him. Kaushik Week bowling quite well as well. 3 overs, 23 runs and 1 wicket for him. Sharant, 3 overs, 27 runs, no wicket for him. Pranab Bhatia, 2 overs, 20 runs and no wickets. Deepak Devadiga, the impact player, 4 overs, 45 runs and 1 wicket. Yes, he was a bit expensive out there. Adikosh Hegde, 2 overs, 22 runs and a wicket. And Kranti Kumar, 2 overs and 16 runs and no wicket for him. So that was it with the bowling. And a very, very comfortable win for Shivamonga Lions. They win by 36 runs here. Yes, and that calls, for some discussions to be taken in the Kalyani Bengaluru Blasters dugout. And when they come out, they need to come out strong and take revenge of all the lost moments in this match. They are now, they've lost 2 of 2, or they have played. And that is not a good sign for a good team, having the captain in the likes of Agarwal, good players like Shubham Hegde and Lochan Apanna, with all those players who are there a part of your team, but still you cannot make to the W. It is just a disappointing end to your outing of the evening. But there it is, it stands, and it is 36 runs. That is the difference between 201 and 165 between the Shivamoga Lions and Bengaluru Blasters. Just not the end of the road for the Blasters. They have a point to prove when they come next, that yes, we are not out and we are not dusted. We can fight back as we are the Blasters. Blastering fight is required, but the Lions played like a lion today, and they were the straight winners, all the 3 departments. Here it is time to say goodbye to all the listeners and our companions on the Cricket Live app. We promised to get you some more exciting cricket matches over the period of time, and tomorrow it will be a fun-filled games that will be hosted by us and our team here at the Cricket Live app. Do join us then, but for the time being, just allow us to say goodbye to you. Goodbye and good night for all the Indian listeners. Once again, ending the day with a note: Happy Independence Day. Bye-bye. Thank you for tuning in. This is your commentary team signing off. Catch you next time with more exciting live match.